ओके, और अफगानिस्तान कल्चर LOC, वर्किंग बाउंड्री, NSG UN Security Council trade, NSG UN Security Council trade FATF, और मुस्लिम माइनॉरिटी डिप्लोमेटिक। बस आई गेस trade FATF UNSC असली मुस्लिम माइनॉरिटी डिप्लोमेटिक, yes, that's all जी। Okay, let's continue. There are lots of issues between India and Pakistan. CPEC से start करते हैं। India, Pakistan do have conflict over CPEC, and this conflict is based on two main factors. There are two factors that bring conflict between Pakistan and India on CPEC. One, Indians claim that CPEC is illegal because it passes through what they call Pakistan occupied Kashmir. Indians say that CPEC passes through what they call as Pakistan occupied Kashmir. This is something that we reject, and we say that this is not occupied by Pakistan. In fact, this is a disputed territory, and its final fate has to be determined by the people of this region. जो people of गिलगित-बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर एंड इंडियन occupied कश्मीर है, ये सारे के सारी टेरिटरीज इसके अवाम डिटरमिन करेंगे what is their future, and they will determine themselves. So unless and until they determine it's a disputed territory and we have not illegally occupied them, these territories have made an agreement with Pakistan. इन टेरिटरीज का पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट मौजूद है, और उस एग्रीमेंट की बेसिस पे ये पाकिस्तान के साथ शामिल है, एंड देयरफॉर इट इज नॉट एन ऑक्युपाइड टेरिटरी। सो एक तो इस पे इशू है जी। आरिफ, इसके बारे में थोड़ी कम्प्लेक्सिटी है। आपने कश्मीर इशू में पता नहीं इसको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बट या अगर होगा तो पढ़ेंगे। कम्प्लेक्सिटी ये है कि हम ये समझते हैं, पहला पॉइंट, कि गिलगित-बल्तिस्तान इज ब्रॉडली पार्ट ऑफ द कश्मीर प्रॉब्लम। कश्मीर टेरिटरी का हिस्सा है नहीं है, इस डिबेट पे जाए बगैर कश्मीर प्रॉब्लम का हिस्सा है, एंड इट इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। आप मैप देखें, जीबी को उन्होंने डिस्प्यूटेड कहा हुआ, लेकिन इट्स नॉट लाइक द इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर इशू। इसका इशू ये है गिलगित-बल्तिस्तान का, दैट द पीपल ऑफ गिलगित-बल्तिस्तान कंसिडर देमसेल्व्स, हमारा ये दे कंसिडर देमसेल्व्स टू बी सेपरेट फ्रॉम कश्मीर वैली। जो कश्मीर के लोग हैं या कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, उससे अपने आप को अलग समझते हैं। सो जीबी इज अ सेपरेट रीजन विद इन कश्मीर, बट इट इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। हम भी समझते हैं, हम भी जीबी को डिस्प्यूटेड टेरिटरी समझते हैं, लेकिन हम जीबी को ओवरऑल कश्मीर का हिस्सा नहीं समझते, लेकिन कश्मीर के साथ उसका एक सेपरेट स्टेटस समझते हैं हम उसको। सो जीबी आप कह सकते हैं इज अ स्पेशल एरिया विद इन कश्मीर। ये आप इस तरह से अगर आसान लफ्ज़ में समझ लें, है ये भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी। इंडिया इसको डिस्प्यूटेड यस कहता है, इंडिया भी कहता है, ट्रू। ट्रू, GB has no problem with the CPEC. At least GB's government have no objections to CPEC जी। GB की जो गवर्नमेंट है that is on board on CPEC, वो ऑन बोर्ड है गवर्नमेंट। मैं पब्लिक के बारे में नहीं जान सकता, बट ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द पब्लिक इज आल्सो इन। कुछ इश्यूज हैं, मिसाल के तौर पर एक जो ये बन रही है हवेलिया में ड्राई पोर्ट बन रही है, उस पर एतराज़ात हैं, गिलगित में बननी चाहिए। लिमिटेड ऑब्जेक्शंस हैं, बट दे डू नॉट हैव अ ब्रॉडर ऑब्जेक्शन ऑन CPEC, ऑब्वियसली नॉट। सो CPEC के ऊपर पहला इशू जो है वो उसकी इंडिया का क्लेम कि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड टेरिटरी है, हम नहीं मानते इस बात को, दैट्स अ बेसिक पॉइंट। दूसरा जो फैक्टर है जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट है, it is Pakistan's assertion that India is using the proxy war, the terrorists, to sabotage CPEC projects. India जो terrorism कर रहा है through Taliban, through Baloch insurgents, through sectarianism, yes BL तीनों तरह का, even तालिबान भी और
BLA वगैरह भी और इवन सेक्टेरियन जो वायलेंस है, दिस ऑल इज एम्ड एट disrupting the CPEC trade. So this is so India is a kind of playing a negative role. It is trying to sabotage and saboteur the CPEC growth and CPEC projects in Pakistan. ये हमारा उनके ऊपर एक दूसरा है. तो ये दो बेसिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं CPEC के हवाले से. प्रॉक्सी वॉर, सॉरी अफगानिस्तान. अफगानिस्तान पे भी वही टेररिज्म वाला इशू आ जाएगा. पाकिस्तान का जो बुनियादी इशू है अफगानिस्तान के हवाले से इंडिया के साथ, वो बेसिकली एक बेसिक पॉइंट ये है, पाकिस्तान कंसिडर्स दैट इंडिया uses Afghan soil to launch proxy war against Pakistan. Indians use Indian intelligence uses the Afghan territory to geo-encircle Pakistan, एक geostrategic encirclement of Pakistan करना चाह रहे हैं, sandwich करना चाह रहे हैं पाकिस्तान को from both sides. एक side पे they threaten the war, on the other side they use the proxies against Pakistan. This kind of strategy by India in Afghanistan is a major conflict, and this is the reason why we don't want any Indian role in Afghanistan. हम इंडिया का कोई रोल अफगानिस्तान में देखते नहीं है, because इंडिया वहां पे एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहा होता है. Having said this thing, कैसे नेगेटिव रोल है आपने वही लिखना है. टेररिस्ट की बात करनी है, तालिबान की बात करनी है, बलोच इंसर्जेंट्स की बात करनी है, सेक्टेरियन की बात करनी है, वहां से ये पाकिस्तान के ऊपर जो है वो कर रहे हो. मुझे याद है मैंने एक जुमला बोला था in your class, if you could recall. So I said Pak-Afghan relations are the subset of Pakistan-India relations. So we broadly see Afghanistan as an issue where India can play a role to destabilize Pakistan. ये हम इस सेंस में हम इसको देखते हैं. तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है वहाँ. कल्चर, culture में obviously we know that India has severe ties with Pakistan on sports, entertainment, etc. etc. इन issues पे इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में conflict मौजूद है. कायनात and because scenario 4 failed, अभी तो scenario 4 शुरू ही नहीं हुआ, वो तो scenario 4 हो सकता है. It can fail if it fails, obviously. Failed कल आपने पास में कहना है, पास में नहीं फ्यूचर में लेंगे if it fails. Yes. अच्छा, कल्चर में. So India has been boycotting the cultural ties with Pakistan, और वो cultural ties का जो boycott है वो क्यों हो रहा है? Because of Indian allegations of terrorism on Pakistan. Indian पाकिस्तान पे terrorism का इल्जाम लगाते हैं, and they have been involved in cultural disengagement with Pakistan. उस पर अगर मैं बात करूं, कल्चरल डिसएंगेजमेंट की बात करूं, तो दे हैव बीन बाइकॉटिंग द बायलैटरल क्रिकेट स्पोर्ट्स सिंस 2012. वो 2012 से बायलैटरल क्रिकेट स्पोर्ट्स नहीं खेल रहे, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेते हैं, वैसे नहीं लेते. दूसरी जो चीज़ है, आप लोग जानते हो सिंस 2016 से ऑनवर्ड्स इंडिया हैज़ बैंड पाकिस्तानी एक्टर्स. यस, आवर म्यूजिशियंस और सिंगर्स, उनको बैन किया हुआ है इंडियंस ने पाकिस्तान में, चैनल्स को बैन किया हुआ है, एंड वी डिड द सेम टू देम. और एक म्यूचुअली कल्चरल बाइकॉट जो है वो मौजूद है दोनों स्टेट्स के अंदर ऑन मोस्ट ऑफ द इश्यूज. सो ये एक इंपॉर्टेंट कल्चरल डिवाइड है, लेकिन ये इंडिया की इनिशिएशन है, हमारी नहीं है. ये ध्यान रखिएगा. LOC एंड वर्किंग बाउंड्री, डिफरेंस आइडिया है दोनों में. LOC एंड वर्किंग बाउंड्री ओके, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है. ठीक है, जिनको आइडिया है अच्छी बात है. शॉर्टली जी, LOC divides the Indian Kashmir from Pakistan's Kashmir, while working boundary is the boundary between Pakistan and Indian occupied Kashmir. Let me draw a map. छोटा सा फर्ज करें ये पाकिस्तान है, फर्ज कर लें, मैं इसको डिवाइड करता हूँ. उनका स्टार प्लस बैन ही रहे तो अच्छा है. ये सर, हर मसले का इलाज बैन करना नहीं होता, कुछ सेल्फ कंट्रोल भी होता है. ओके, लेट्स सपोज दिस इज, ये एक जो
ये वाली बाउंड्री है, दिस इज इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर एंड दिस इज आजाद जम्मू एंड कश्मीर। फर्ज करें ये दोनों कश्मीर है। अच्छा, अब ये जो बाउंड्री है, द बाउंड्री फ्रॉम हेयर टू हेयर, जो आजाद कश्मीर है और दूसरी तरफ इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, ये वाली जो बाउंड्री है इसको हम कहते हैं एलओसी। सो एलओसी इज द बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तान कश्मीर, पाकिस्तान के आजाद जम्मू कश्मीर एंड इंडियन कश्मीर, दोनों के दरमियान में है। एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, ये बनाई गई थी इन द सीज फायर एग्रीमेंट, यूएन ने एस्टैब्लिश की थी एलओसी। लेकिन उसको सीज फायर लाइन कहते थे, एलओसी का नाम दिया गया 1972, उसको 72 से हम एलओसी कहते हैं। सो एलओसी डिवाइड्स इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर फ्रॉम पाकिस्तानी कश्मीर। यूएन ने लाइन ऑफ कंट्रोल, यूएन ने कहा था उसको सीज फायर लाइन, लाइन ऑफ कंट्रोल हमने शिमला अकॉर्ड में कहा। फिर जो दूसरी है ये वाली बाउंड्री बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, जहां के एक तरफ इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, सियालकोट का एरिया पाकिस्तान का, इसको हम कहते हैं दी वर्किंग बाउंड्री। Why don't they consider LOC as international border? This is one of the options that they consider as a solution. कायनात ये solution में से एक option ये भी है कि let's make LOC as an international border, but nobody agrees with that. मैं repeat करता हूँ जी, working boundary. Working boundary is the boundary between Pakistan. मैं इसको green से highlight कर देता हूँ. The boundary between Pakistan, ये वाली जो boundary है, इसके एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ जाएंगे, that is Indian occupied Kashmir. इसको हम कहते हैं वर्किंग बाउंड्री। हमारे सियालकोट, आप में से कोई सियालकोट से हो, जो शकरगढ़ है, नारोवाल है, ये इससे अक्रॉस सामने जम्मू का इलाका नजर आता है। अगर आप देखें माउंटेन्स नजर आ रही होती हैं, तो सामने जो जम्मू का इलाका है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और इस तरफ पाकिस्तान है जिसपे डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है। एलओसी के दोनों तरफ डिस्प्यूट है, वर्किंग बाउंड्री के एक तरफ डिस्प्यूट, सिंपल, कोई बात नहीं, आप मैप पे देख सकते हैं। यस, बॉर्डर टेंशन नहीं होती, बॉर्डर टेंशन नहीं होती पाकिस्तान में। हमारे दिनों में ये बाकी जो इलाका है सारा बॉर्डर कहलाता है, ये यहां से लेकर नीचे सारा इंटरनेशनल बॉर्डर कहलाता है, समंदर तक। लेकिन यस ट्रू अमन, सो लेकिन जो ये इलाके हैं वो एलओसी और वर्किंग बाउंड्री कहते हैं। एलओसी और वर्किंग बाउंड्री में दोनों के एक तरफ डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, लेकिन एलओसी के दूसरी तरफ भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वर्किंग बाउंड्री के इस तरफ डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है। यस, अब इशू क्या है? इशू ये है कि इंडिया पाकिस्तान में एलओसी के ऊपर और वर्किंग बाउंड्री के ऊपर सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था इन 2003। We had a ceasefire agreement in 2003. However, India violates this ceasefire agreement numerous times each year, hundreds of times. In fact, इस साल अभी हम अगस्त में हैं and India has violated the ceasefire agreement almost 2000 times. Almost होने वाले हैं, एक हफ्ते 10 दिन में 2000 हो जाएंगे। So almost 2000 times India ने इस ceasefire violation की खिलाफवर्जी की है। They have been firing across the border. वर्किंग बाउंड्री पे भी मोस्टली यस एंड उस पे भी एलओसी पे भी। अच्छा, अब उस फायरिंग पे ईच ईयर hundreds of people get injured, dozens of get killed. इकोनॉमिक लॉस तो होता ही होता है, बट पीपल डाई, पीपल गेट इंजर्ड। दोनों में था फायदा। इट वाज एलओसी, वर्किंग बाउंड्री, दोनों पे सीज फायर का एग्रीमेंट, सीज फायर एग्रीमेंट ऑन बोथ ऑफ देम। लेकिन इंडिया वायलेशन भी दोनों पे करता है, और उस वायलेशन से इस साल मैंने कहा ऑलमोस्ट 2000 टाइम्स हो चुकी है वायलेशन, और सो फार ऑलमोस्ट 27 के करीब लोग जो है दे हैव डाइड सो फार इन दिस इंडियन फायरिंग। So dozens of people get killed each year, hundreds of them get injured each year, and there is obviously millions of dollars of economic loss to Pakistan as well. और ये हमारे दरमियान में एक इशू है, बॉर्डर की टेंशन आती है। ऐसा ही है, कायनात बट हम वो लिखेंगे नहीं पाकिस्तान का, वो करते हैं ये लिखेंगे। मीडिया में एक जुमला बोला जाता है that media does not give you the wrong picture, it does gives you the half picture. It gives you selected facts. It doesn't give you the false facts, but it gives you the selected facts. And that's what you need to do in your exam. You need to be selective. You need to be pinpointed towards a particular direction. That's what we call propaganda. That's what we call, तो यही तो आप गवर्नमेंट जॉब का मतलब यही होता है। Okay, let's go to NSC. Yes, exactly.
एनएससी के ऊपर जाते हैं। एनएससी पे हम थोड़ी सी बात कर चुके हैं। मतलब सही बात है, इंडिया की नहीं, जस्ट जनरली भी आप इस तरह से करते हैं। एनएससी के ऊपर मतलब फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान का कोई भी होगा, आपने ऐसे ही करना है। सो दीवे को पीछे हटकर हम पढ़े हुए हैं, कोई बात नहीं, पढ़ते रहे इस तरह से। एनएससी की जब हम बात करेंगे तो मैं शायद पहले बता चुका हूं, हम पहले बात कर चुके हैं इसके ऊपर। इंडिया इज अ कैंडिडेट फॉर एनएसजी मेंबरशिप सिंस 2016। इंडिया 2016 से इसका मेंबर है। पाकिस्तान इज आल्सो अ कैंडिडेट सिंस 2016। 2016 में इंडिया ने अप्लाई किया था। वी आल्सो अप्लाइड फॉर द मेंबरशिप ऑफ द एनएसजी। However, Pakistan objects to India's membership in NSG because we think that India's membership into NSG will threaten Pakistan's security. हमारी security पे एक compromise होगा. It will threaten Pakistan. It will have an adverse impacts on Pakistan. Therefore, we oppose and lobby to oppose India's membership in NSG. नहीं, अभी नहीं बना. It's just a candidate जी. अभी तक नहीं बना member. चाइनीज वीटो करी जा रहे हैं उनको, जब तक चाइनीज है तो ऑब्वियसली वी डोंट नीड टू वरी। तो एक एनएसजी के ऊपर एक डिप्लोमेटिक किस्म का हमारा स्टैंड ऑफ है इसकी मेंबरशिप के हवाले से। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इस पे भी हम बात कर चुके हैं ऑलमोस्ट। इंडिया इज अ कैंडिडेट फॉर द वीटो मेंबरशिप, परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, एंड ऑब्वियसली इफ इंडिया गेट्स द मेंबरशिप तो उसके एडवर्स इंपैक्ट्स आएंगे पाकिस्तान पे। And Pakistan is part of the Coffee Club. Pakistan is part of the G77, जो कि एक group of states है at the forum of UN that oppose any expansion in the veto membership of the UN Security Council. हम उसको oppose करते हैं और हम उस ग्रुप का हिस्सा हैं, उस लॉबी का हिस्सा हैं जिसको हम कॉफी क्लब कहते हैं। कॉफी होती है, कॉफी क्लब और G77 ये एक ही चीज के दोनों। और यहां से हम इन दो फोरम से, पाकिस्तान इज अ प्रोएक्टिव मेंबर, पाकिस्तान प्रीजाइडेड G77, हम इसको हेड करते रहे। वी आर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप एंड आवर ऑब्जेक्टिव इज टू रेजिस्ट एनी काइंड ऑफ एक्सपेंशन। ये ग्रुप सारा इंडिया के बारे में तो नहीं है, बट ये ग्रुप तो जनरली है कि जी हमें मजीद वीटो पावर नहीं चाहिए, बट ऑब्वियसली पाकिस्तान उसमें से इंडिया को टारगेट करना चाह रहा होता है। एंड आवर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू एक्सपेंड and not to include India into that as well. तो एक रेजिस्टेंस है पाकिस्तान की तरफ से, एक डिप्लोमेटिक कन्फ्रंटेशन है इंडिया के साथ ऑन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप। ट्रू बरकर जिन्होंने ने कहा जी सर हु आर वी टू हैव ऑब्जेक्शंस ऑन देम? वी आर देयर नेबर्स, वी आर देयर राइवल्स, वी आर देयर एनिमीज। Simple. We are the party that could get affected if India gets membership of NSG. If you are an affected party, you can lobby on that. Yes, true, Faisal. शरीका है हमारा, exactly, absolutely. Okay, ट्रेड पे दो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जी, there are two conflicts. Yes, true. कॉफी क्लब एक जनरल नाम है, G77 उसका ऑफिशियल नाम है। इनफॉर्मली इसको कॉफी क्लब कहते हैं। Faisal, working G77 is aimed at opposing any expansion in veto membership of the UN Security Council. Same है सईद और फायदा आपके सवाल के जवाब में। The purpose of both these forums is to oppose and resist expansion of the UN Security Council membership. After tea now काफी नहीं, it was coffee before, बाद में टी आई। काफी वाला क्लब पुराना है। वीटो का रिपीट कर दें। India wants to become a veto membership of the UN Security Council. You sir please confirm करिएगा, वीटो का आइडिया एक्सप्लेन करूं या that is enough? India wants to become a veto member of the UN Security Council. Pakistan opposes it. Okay. Trade. There are two conflicts on the trade with India. दोनों कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया के साथ, दो तरह के कॉन्फ्लिक्ट हैं ट्रेड में इंडिया के साथ। One is the conflict on bilateral trade. You must be knowing that since last year, August 5 decision by India, जब last year 5 अगस्त को इंडिया ने डिसीजन लिया था कश्मीर पे, since then Pakistan had blocked all trade with India with a few exceptions. Medicine और emergency से related जो trade है that continues, but we have blocked and cancelled all bilateral trade with India since last year.
1 साल से हमने इसको बंद किया हुआ है ट्रेड को. बिफोर वी ब्लॉक्ड इट, द ट्रेड वॉल्यूम वाज ओवर $2 बिलियन. $2 अरब से ज्यादा होता था. और मैं 5 अगस्त पिछले साल से पहले जब पढ़ाता था तो आई स्टिल रिमेंबर कि हम उन बच्चों को ट्रेड कन्वर्जेंस में लिखवाते थे कि हमारी इंडिया के साथ ट्रेड, दुनिया के टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर में से एक इंडिया भी आता था हमारा. बट अब नहीं है. वी हैव ब्लॉक्ड ऑल काइंड ऑफ ट्रेड विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस. सो दिस इज अगेन अ डाइवर्जेंस बिकॉज हमारा कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के साथ, और उस कॉन्फ्लिक्ट में हमने ट्रेड ब्लॉक कर दी हुई है उनके साथ. वी डोंट ट्रेड विद देम. इनडायरेक्ट ट्रेड आती है दुबई वजह से, बट डायरेक्ट ट्रेड नहीं है. दूसरा कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के साथ वो है ट्रांजिट ट्रेड का. और जो ट्रांजिट ट्रेड का कॉन्फ्लिक्ट है, दैट इज, आपको शायद कल बताया था हमने, दैट पाकिस्तान अलाउज ओनली इंडिया टू इंपोर्ट फ्रॉम अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया. वी डू नॉट अलाउ इंडिया टू एक्सपोर्ट टू अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया थ्रू पाकिस्तान लैंड कॉरिडोर. हम लैंड के रूट से इंडिया को एक्सपोर्ट की इजाजत नहीं देते अफगानिस्तान में या सेंट्रल एशिया में. So there is a limited transit cooperation, but we also have a conflict on transit trade between India and Afghanistan and Central Asia. ये basically conflicts हैं जी इस हवाले से. Why Saudi Arabia oil stopped oil and aid, ये आखिर में पढ़ेंगे जी. इस टॉपिक से रिलेट नहीं करता. बल्कि आपका सवाल भी है, ये आपका ही बल्कि सवाल है वो, इसको हम आखिर में करेंगे, यहाँ पे रेलेवेंट नहीं होगा. Definitely Shayar, it's not without tax. We do take kind of tariffs from them. इंडिया को हम फ्रीली जाने देंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता. इंडिया भाई, I was reading somewhere that India has ordered new jets to improve its defense generation of Pakistan. वही ये सोशल मीडिया की पोस्ट है, ऑफिशियल न्यूज नहीं है. लास्ट पॉइंट को रिपीट करूं. I said we do not allow India to export its goods to Afghanistan and Central Asia. हम अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया को, इंडिया को एक्सपोर्ट करने की इजाजत लैंड के रास्ते से नहीं देते. ओके, लेट्स गो टू FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. FATF पे आपका लेक्चर होता है? डिड यू हैव अ लेक्चर ऑन FATF? होना है, ठीक है, हो गया या होना है, जो भी होगा. तो आप उसको FATF को पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे. बट FATF के बारे में एक सिंपल आइडिया ये भी है. इसको जरा प्लीज सुनिएगा. ये जो FATF है, इसके हवाले से हमारा जो पर्सपेक्टिव है इंडिया का, और पर्सपेक्टिव इज दैट पाकिस्तान वाज प्लेस्ड ऑन द ग्रे लिस्ट ऑफ FATF. Pakistan was placed on the grey list of FATF because of Indian lobby. Indian lobby की वजह से हम grey list में डाले गए थे. And secondly, ये जो हमारी Indian lobby है, that is making attempts to put Pakistan into the blacklist. इंडिया ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने में लॉबी का रोल प्ले किया. It played a role. It used its lobbies to put Pakistan into the grey list, and currently it is using its lobbies to put Pakistan into the blacklist. Blacklist में इंडिया डालना चाह रहा है पाकिस्तान को. तो ये बेसिकली जो है वो दो इश्यूज हैं पाकिस्तान के इंडिया के हवाले से. तो इंडिया इज बिहाइंड ऑल ऑफ दिस. Who are in lobby? Western states, US, Europeans. So it was India that was the main force behind putting Pakistan to the grey list, and obviously, and there, ये मैं नहीं कह रहा again. शामुल कुरैशी साहब ने कुछ 2-4 दिन पहले कहा, it is India that is lobbying to put Pakistan into the blacklist. ये शामुल कुरैशी साहब ने 2 दिन पहले कहा. लॉबी मतलब होता है इसमें एक लाइक माइंडेड लोगों का प्रेशर ग्रुप बनाते हैं. एक लाइक माइंडेड लोग हों, आपसे मिलते जुलते जहन के लोग हों, और वो बनाते हैं एक ग्रुप बनाकर आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं. इसको हम लॉबी कहते हैं. फ्रेंड्स कह रहे हैं. यस, मुस्लिम माइनॉरिटीज. कल फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट किसी ने सुनी है? इंडिया में एक वाकया हुआ परसों रात को, अगर आप में से किसी ने देखा हो. फेसबुक पोस्ट आई थी, कोई ब्लास्फेमस टाइप की पोस्ट थी, जिसपे एक इशू बना मुसलमानों की तरफ से, और कल फॉरेन ऑफिस ने कंडेम किया. पुलिस के 3 मुस्लिम्स, 3 मुसलमानों को मारा उन्होंने पुलिस ने, और हमारे फॉरेन ऑफिस ने कंडेम किया कल उसको. वहां मामला होता है, हमारे फॉरेन ऑफिस बोल पड़ता है. अच्छा,
हम ये समझते हैं, we believe that Muslims minority in India is being threatened by the Hindutva policies, the fascist policies of Modi government. जो मोदी गवर्नमेंट है वो फाशिस्ट पॉलिसीज रखती है एंड दे हैव अ डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड टुवर्ड्स मुस्लिम्स, और उसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं. उसकी एग्जांपल्स जो वायलेंस होता है, जो कम्युनल वायलेंस होती है मुसलमानों के अगेंस्ट, गुजरात से लेकर रिसेंट जो वाकया हुआ उस वक्त तक. फिर हम बात करते हैं उसके अंदर कश्मीर की एग्जांपल लेते हैं. कश्मीर में जो मुस्लिम्स के साथ हो रहा है, वी टॉक अबाउट द CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं. वी टॉक अबाउट दी और क्या होते हैं, दी विजिलेंटिज्म जो मुसलमानों के अगेंस्ट होता है, जो एक विजिलेंट है हिंदूज, एक्सट्रीमिस्ट हिंदू, नॉट ऑल ऑब्वियसली बट सम ऑफ दोज RSS माइंडेड पीपल जो हिंदुत्व के लोग हैं, दे टारगेट द मुस्लिम्स ओवर देयर. तो मुस्लिम माइनॉरिटीज, मुस्लिम की खास कर बात कर रहा हूँ, they have been discriminated at and they have been targeted by the BJP's Hindu government, Hindu nationalist government. अच्छा, अगर आप में से किसी ने एक सुना हो, मुझे अब नाम नहीं आता, कोई नाम आप में से बता दें. बीजेपी के एक लीडर ने एक अल जज़ीरा को इंटरव्यू देते हुए कहा था, एक जुमला बोला था, और वो जुमला जरूर आप यहाँ पे कोट कीजिएगा. इमरान खान साहब ने उसको, उस इंटरव्यू को ट्वीट किया था, और उन्होंने कहा था कि उस इंटरव्यू में बीजेपी के लीडर ने कहा था, उनका मेंबर है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उन्होंने कहा कि जी जिस मुल्क में भी, एनीवेयर इन अ कंट्री, इफ द मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रीव मोर देन 30%, देन दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर दैट कंट्री. नाम मुझे नहीं आता इकरा, सॉरी, मुझे आई एम सॉरी फॉर दैट, बट नाम मुझे, बट MLA थे और उन्होंने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उन्होंने कहा था, शायद यही नाम होगा, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द नेम. लेकिन ये जरूर करिएगा, इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, बट वर्ड्स भी एग्जैक्ट ये नहीं है, बट आइडिया उनका यही था कि मुस्लिम पॉपुलेशन एक परसेंटेज से बढ़ जाए तो वो उसके लिए मसला बन जाता है. तो ही वाज एक्चुअली, इसको हम कहते हैं फाशिस्ट पॉलिसी. फाशिज्म होता है अ स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म दैट इज बिल्ड अपॉन द हेट्रेड. वो नेशनलिज्म जो नफरत की बुनियाद पे बने, उसको हम फाशिज्म कहते हैं. ट्रू, ट्रू ब्रदर. सो ये बेसिकली जो आइडिया है, ये इंडिया के अंदर हम इसको लेते हैं, और वो खुल के कह रहे होते हैं सब इस बात. हाँ, बाबरी मस्जिद वाला वाकया, वी कैन आल्सो कॉल इट बाबरी मस्जिद इन राम मंदिर. हिंदुत्व पॉलिसी, यू सर, हिंदुत्व, द ग्रैंड हिंदू स्टेट, द ग्रैंड हिंदू आइडिया. डिप्लोमेटिक आखिरी है जी. डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट क्या है? डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट, it's not about genocide, kainat. Fascism is not about genocide. It is about discrimination. It is the ideology which is a hate ideology. You want to become a nationalist, you want to identify yourself with a group, but on the basis that all others are wrong and you discriminate all others. उस डिस्क्रिमिनेशन में आप जिनोसाइड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, बट इंडिया कश्मीर में जिनोसाइड कर रहा है, नो डाउट ऑन दिस वन. Yes, exactly, true. Again, fascism itself is not necessarily based on genocides. It can be based on hatred, and obviously hatred जो है वो फिर आगे lead कर सकता है genocide. Yes, that's true. Diplomatic जी. Since 2016, India has been officially pursuing a policy of diplomatic isolation from Pakistan. I repeat, since 2016, India is officially pursuing a policy of diplomatic isolation for Pakistan. They are, yes, Fatma, यही नाम है, सुब्रमण्यन स्वामी साहब जो भी थे. So ये diplomatically बड़ा important है. Diplomatic isolation से मतलब है they use international forums to blame Pakistan. They use international forums to shame Pakistan, and they have been trying to isolate Pakistan internationally, creating a bad image for Pakistan. And similarly, Indians are also using they have also been having a diplomatic downsizing with Pakistan. Last 2 महीने पहले, लास्ट महीने में जुलाई में, they have reduced the diplomatic presence in Pakistan. अपने स्टाफ को अदा कर दिया, हमारे स्टाफ को एक्सपेल किया, we expelled their staff. तो एक डिप्लोमेटिक डाउनसाइजिंग कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, एक डाउनग्रेडिंग their diplomatic relationship, blaming Pakistan, shaming Pakistan at different national and international forums, etc.
वो ये था जजीना के after 5th of August we withdrew our ambassador and we expelled Indian ambassador from Pakistan. ambassadors को निकाल दिया, अपने बुला लिया, उनको निकाल दिया. इस साल जुलाई में इंडिया ने पाकिस्तान के 2 लोगों को पकड़ा और फिर बाद में कहा कि 50% ऑफ द एम्बेसी स्टाफ मस्ट वेकेट द इंडियन एम्बेसी, पाकिस्तानी एम्बेसी इन इंडिया. हमारी आधी एम्बेसी को खाली करवा लिया, वापस भिजवा दिया. और रिस्पांस में हमने उनकी आधी एम्बेसी को कहा कि आप निकल जाएं वापस. बदर का इंडिया डायरेक्टली से दैट पाकिस्तान इज आइसोलेटेड बिफोर आई की गवर्नमेंट. इंडिया ये नहीं कहता आई की गवर्नमेंट से पहले था, इंडिया कहता है वो अब भी कहता है. ये आई की गवर्नमेंट वाला पीटीआई उन्होंने ऐड करा दिया. वैसे उन्होंने वो जनरली बात करते हैं, वो कहते हैं वी पाकिस्तान स्टैंड्स आइसोलेटेड, वो ये बात कर रहे होते हैं. लेकिन हम नहीं मानते इस बात को. वी डोंट गेट आइसोलेटेड. वो ब्रिक्स फोरम को यूज करते हैं, वो हार्ट ऑफ एशिया को यूज करते हैं, वो यूएन को यूज करते हैं. दे यूज बाइकआउट ऑफ सार्क. दिस ऑल मीन्स टू डिप्लोमेटिकली आइसोलेट पाकिस्तान. Yes, it's a kind of code word. Not exactly Ikra, except for ये जो recent वाकया हुआ, closure of the consulate, that is the beginning of the downsizing of the that particular thing. In context of Kashmir, Pakistan remained isolated. No जी, हम ना asma sorry, हम उसको नहीं कहेंगे. हम कह रहे हैं कि India attempt कर रहा है, but obviously it is not successful. देखिए ना, if India is successful in diplomatic isolation of Pakistan, do you really think we are isolated? When we get IMF bailout package, do you really think that we are isolated? Obviously not. If Americans were praising Pakistan for a positive role in Afghanistan, do we stand isolated? Not. Pakistani exports are growing. Are we isolated? We are not. So India जो SCO के member बने हैं 2017 में, 16 में इंडिया ने कहा था कि पाकिस्तान को आइसोलेट कराएंगे, 17 में हम SCO का मेंबर बने हैं, तो obviously we are not isolated. हम सार्क के वर्चुअल समिट में शरीक हुए, वी पार्टिसिपेटेड एंड वी आर नॉट आइसोलेटेड. हम बांग्लादेश के साथ था, तो वी आर नॉट. इंडिया जो मर्जी कह ले, इट फेल्ड. नो, नॉट एट ऑल अस्मा. मेरे ख्याल में पाकिस्तान डज नॉट स्टैंड आइसोलेटेड इन कश्मीर. इट इज इंडिया दैट स्टैंड्स आइसोलेटेड, पर्टिकुलरली सिंस अगस्त 5. पिछले एक, आप इसकी अस्मा एग्जांपल ले लें. ये जो कमाला हारिस हैं, इनकी स्टेटमेंट पढ़ लें. उन्हें कहा कश्मीरीज are not alone, the world is with them. So who stands isolated? We or them? तो मैं तो बिल्कुल सिंस मैं अगर कहूं तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, कश्मीर पे पाकिस्तान was isolated, but thanks to India's foolish steps, Pakistan is no longer isolated on Kashmir. No Shariar, actions don't speak louder than words in international politics. In international politics, words speak louder than actions, and that's what's more important. International relations के अंदर words are so important. आप Balfour Declaration पढ़ते हैं. These were mere words, and they really matter even today. Yes, diplomatic means are more important than the actions themselves. हम UN resolution की बात करते हैं. अगर रेजोल्यूशन के वर्ड्स ना होते तो आज हम किसकी बात कर रहे थे? सो मेरी अंडरस्टैंडिंग आईआर के मामले में थोड़ी डिफरेंट है. ये जनरली तो दुरुस्त बात है, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, बट आईआर में ये थ्योरी अप्लाई नहीं होती. हमजा, हाई कमिश्नर्स आर देयर इन कॉमनवेल्थ स्टेट्स. कॉमनवेल्थ स्टेट्स में होते हैं हाई कमिश्नर्स होते हैं, बाकी मुल्कों में एम्बेसडर्स होते हैं. तो पाकिस्तान के इंडिया के अंदर हाई कमिश्नर होता है. मेरा एम्बेसडर का लफ्ज यूज किया, सॉरी फॉर दैट, बट यस, हाई कमिश्नर को विड्रॉ किया. शरियार, इवन कश्मीर के ऊपर भी मैं बात करूं, डिप्लोमेसी मैटर्स मोर देन. देखिए, आपने पहले इंटरनेशनल एनवायरनमेंट चेंज करना होता है, ओपिनियन चेंज करना होता है, फिर एक्शंस आते हैं. एक्शंस फॉलो द वर्ड्स. So we have to use the diplomacy. We have to make sure that Kashmir is highlighted internationally. Internationalization of the Kashmir issue, only then that will translate into an action. So it will be a next step after words. High commissioners are in Commonwealth states. ब्रिटिश जो कॉलोनीज रहे हैं सिवाय अमेरिका के, बाकी तमाम जो कॉलोनीज थी, दे हैव एस्टैब्लिश्ड एन ऑर्गेनाइजेशन जिसको कॉमनवेल्थ कहते हैं. तो कॉमनवेल्थ स्टेट्स के अंदर हाई कमिश्नर्स होते हैं. बायलैटरल था तो रीजनल हो गया है अब. थैंक यू.
Yes, article was actually just having a broad overview, detail में नहीं होता, short overview था on that. Okay, this is all जी on that. ये थोड़ा this is all about it. कोई question है तो पूछें, then we move to the next topic. इसको conclusion कैसे करना है? खलीज वहीद मुझे कंफर्म कीजिएगा, डिड वी टॉक अबाउट पाकिस्तान रिलेशंस विद ईरान एंड सऊदी अरेबिया, हमारा उनके दरमियान में रिलेशनशिप को बैलेंस करने की बात की गई? वी डिड नॉट. चलें जी, पहले उसे डिस्कस करते हैं. लेट्स मूव ऑन दैट. ओके, पाकिस्तान रिलेशन विद ईरान एंड सऊदी अरेबिया ये नहीं किया हमने, राइट? ठीक है. अच्छा, इस पे तो सवाल नहीं है, उसी पे चलने लगा अभी, इसमें सवाल तो नहीं है. आफ्टर 1947. ओके, पाकिस्तान एट्रोसिटीज की अगर आप बात करें शाफे, तो उस पे जो जिस डायमेंशन पे पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया जाता है वो होती है दैट दो इश्यूज पे हैं. एक कहा जाता है जम्मू मैसेकर, आपने शायद जम्मू मैसेकर का नाम सुना हो, वेयर द हिंदूज एंड सिख्स वर टारगेटेड इन द जम्मू एरिया. वहां फसादात हुए थे एंड इंडिया ब्लेम्ड पाकिस्तान के जी, पाकिस्तान वाज इन्वॉल्वड इन दैट. एक तो वो उस पर इनडायरेक्ट पाकिस्तान पे इल्जाम लगता है. लेकिन आई डोंट नो तारिक अली साहब ने जो हिस्टोरियन है उन्होंने किस सेंस में बात की है, बट द सेकंड वे इन विच पाकिस्तान के एक नेगेटिव रोल की बात करते हैं लोग, वो कहते हैं कि जी जब ये जो महाराजा हरि सिंह का इशू था, तो उसके इशू पे पाकिस्तान की तरफ से जो रिटायर्ड मिलिट्री के लोग थे और मोस्टली उनमें ट्राइब्समैन शामिल थे, एंड दे वर आस्क्ड टू फाइट अगेंस्ट द इंडिया इन कश्मीर. सो फ्रॉम पाकिस्तान साइड द मिलिटेंट्स, उनको कह लें आप, they went across into Kashmir and they started fighting over there, and some of them are blamed to have been involved in heinous crimes, जो जिसका जिक्र आपने किया, atrocities का जिक्र किया, उसके हवाले से ये इल्जाम लगता है. शाफे, I have been aware of this side जो आपने बात की है. तारिक अली के वर्ड्स तो मुझे नहीं याद, बट आप जिस तरह कह रहे हैं, बट ऑब्वियसली ये एक इल्जाम जरूर है, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सेलेक्टेड फैक्ट्स. Okay. नहीं वहीद, आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान इंडिया क्वेश्चन में कोई ऑप्टिमिज्म है. डू यू सी एनी ऑप्टिमिज्म इन देयर रिलेशनशिप? मेरे कल के आर्टिकल का लास्ट जो पॉइंट था वो बेसिकली इसी पे है. लास्ट 2-3 लाइन अगर आप गौर करें, लास्ट पैराग्राफ पढ़ें, वो इसी के ऊपर है. होना तो चाहिए, लेकिन देर आर नो फैक्ट्स, देर आर नो रियलिस्टिकली देर आर नो रियलिस्टिक बेसिस फॉर अ होप, नजर नहीं आ रही. और उसमें मेरा जो आर्गुमेंट था वो था, मोदी लेड जो गवर्नमेंट है, दैट इज लेस लाइकली टू have any opportunity जिसमें वो आपको फॉरवर्ड लुकिंग अपॉर्चुनिटी नजर, दे आर नॉट लुकिंग इनटू द फॉरवर्ड एज वेल. तो मेरे ख्याल में एग्जैक्टली यही है कि एज लॉन्ग एज मोदी इज देयर, शॉर्ट टर्म में आई डिड नॉट सी, और ना सिर्फ मोदी गवर्नमेंट बल्कि जियो स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंट हमारे रीजन का ऐसा है, तो आपको नजर नहीं आएगा ऐसी अपॉर्चुनिटी कि ऐसा कोई एनवायरमेंट नजर नहीं आ रहा है, ऐसी कोई रे ऑफ होप नजर नहीं आ रही जिसकी वजह से आप कह सकें कि इंडिया पाकिस्तान में जो टॉक्स हैं दैट इज अ प्रोबेबिलिटी. आई डोंट सी दैट हैपनिंग. एग्जैक्टली. लेकिन मोदी को मैं एक सबसे बड़ा फैक्टर समझता हूं, बट इट इज नॉट द ओनली फैक्टर. मेरा आर्गुमेंट उस आर्टिकल में ये था, जियो स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंट ऐसा है, देयर आर 4 बेसिक कंडीशंस दैट जिसको हमने बताई हैं, और वो 4 कंडीशंस जो हैं वो बेसिकली इशू को इतना कॉम्प्लिकेट बना देती हैं, और वो चारों जो आर्गुमेंट्स हैं वो इतने वैलिड हैं अब कि अब आपको नजर नहीं आता कि कोई उसकी वे फॉरवर्ड एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म, अनलेस देयर इज अ सी चेंज. ये ऐसे ही है. आप में से आईआर कोई बच्चे, आप में से कोई है जिसने आईआर पढ़ा हो? एनीबॉडी हु हैज स्टडीड आईआर? तो मैं
उसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, दे कैन हेल्प मी आउट। जुल्फिकार थैंक यू। आप अच्छा, अगर मैं आप लोग जानते हो, हम कोल्ड वॉर को एंड करते हुए हम कहते हैं कि जी जो ये जो थे कोल्ड वॉर है, इसका एंडिंग जो है उसका एक सिंबल हमें नजर आता है व्हेन ईरान इराक वॉर एंडेड। द एंड ऑफ ईरान इराक वॉर वाज अ क्लियर सिंबल ऑफ द light of hope that the Cold War is likely to end. Similarly, Geneva Accords is another symptom जिससे हम indicate कर रहे थे उस वक्त that this is going to be the end of the Cold War. And most important symbol was, आप जो आईआर में बच्चे लाजमी जानते होंगे, वो है the fall of the Berlin Wall. Berlin Wall का जो गिरना, that was the most important symbol that created a hope of the end of the Cold War. तो ऐसी कोई बर्लिन वॉल हमें इंडिया पाकिस्तान में गिरती हुई नजर नहीं आ रही, ऐसा कोई जियो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट में डेवलपमेंट होती हुई नजर नहीं आ रही जिसकी वजह से मैं कह सकूं कि ये, मैं तो अपने आर्टिकल में लिखा था, मेरे एडिटर ने वो निकाल दिया पकड़ के, मैंने तो लिखा था कश्मीर इज द न्यू बर्लिन। ये जो रीजनल कोल्ड वॉर है, इसमें कश्मीर इज द न्यू बर्लिन। ये मेरा बेसिकली पॉइंट था। और मैं एलओसी को मैंने कहा था एलओसी इज लाइक द बर्लिन वॉल सिंबॉलिकली, बट इट्स लाइक अ बर्लिन वॉल। बट ये जो आपको शायद आईआर को पता होगा, इट वाज बर्लिन, इट वाज जर्मनी दैट वाज द इमीडिएट रीजन ऑफ द कोल्ड वॉर। उसकी ऊपर डिवीजन आई थी वहां पे, और फिर वहां से इट स्प्रेड आउट टू द एंटायर। आयरन कर्टन स्पीच आपने सुनी होगी। तो ये कहने का मकसद है कि यहाँ पे बड़ी कश्मीर के इशू को सिर्फ लोकल पर्सपेक्टिव में देखना, इंडिया चाहेगा तो मसला शुरू हो जाएगा हल होना, पाकिस्तान चाहेगा नहीं, इतना सिंपल मसला नहीं है। इट्स सो कॉम्प्लेक्स, इट इन्वॉल्व सो मेनी रीजनल डायमेंशंस दैट अब इसका इशू जो है वो ब्रॉड रीजनल पॉलिटिक्स से, ब्रॉड ग्लोबल पॉलिटिक्स से, और पाकिस्तान इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से, इन सारी चीजों से लिंक करेगा। ओके, बस ये बच्चे थोड़ा सा आइडिया था। कंक्लूजन करेंगे जी इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप की। तो बहुत कायनात, आई डोंट एग्री विद दैट। आई डोंट पुट ब्लेम ऑन जर्मनी, एटलीस्ट नॉट फॉर वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 2 का मैं कह सकता हूँ, वर्ल्ड वॉर 1 का नहीं। मुझे नहीं पता आपके आईआर बच्चों का क्या ओपिनियन है। वर्ल्ड वॉर 1 वाज नॉट इनिशिएटेड बाय जर्मनी, इट वाज नॉट स्टार्टेड बाय जर्मनी। एग्जैक्टली। आई डोंट नो इकरा, मैं नहीं किससे कहूंगा किसका था, बट इस पे नहीं जाएंगे, वो जिस पे इल्जाम करने, बट जर्मनी में नहीं रहना। ओके, जिस पे आप मर्जी इल्जाम लगा दें, उसामा आप सर्बिया पे लगा दें, आप नॉन स्टेट एक्टर्स पे लगा दें, बिकॉज असल मसला तो नॉन स्टेट एक्टर्स का शुरू हुआ था। वो एक ग्रुप था जिसने मारा था। नो कायनात, आई डोंट, मेरी ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट है। नहीं नहीं, वो एक ग्रुप था, आप में से कोई आगे पता हो, जिसने मारा था उसको, बंदे को, वो आर्क ड्यूट को, वो जो भी इल्जाम था, ब्लैक ग्रुप था, ब्लैक कुछ ऐसा का नाम था उसका, ब्लैक के अंदर, वो जो भी। एनीवे, खैर कमिंग बैक, अपने टॉपिक पे आते हैं वापस। टॉपिक इज, इसको कंक्लूड करेंगे। सो द कंक्लूजन ऑफ इंडिया पाकिस्तान रिलेशन इज दैट considering the complexity of the conflicts that we have, considering the broad and old and complex conflicts that we have, the intensity of conflict that we have with India, it is imperative for Pakistan and India that at least they should stop hostility on core issues, and then there is a dire need of conflict management on these issues. At the first step to resolve this conflict, India Pakistan need to acknowledge that it is not in their interest to escalate these conflicts. So resolution का जो first step है, that is the management. You end the war, but to end the war you have to have a ceasefire. So Pakistan and India need to have a diplomatic ceasefire towards each other if they really want to resolve this issue. However, the current state of affairs in India and Pakistan, and particularly under India's Narendra Modi, and the geostrategic environment that we are part of, are an indicator that this ceasefire, this de-escalation is less likely to happen in the near future. This is how you will conclude. एहसान आर्टिकल को जरा प्लीज नीचे लिंक पोस्ट कर दे प्लीज।
हाँ, इकरा उस पर इल्जाम लगाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, लगना भी चाहिए उस पर, और मैं डालता भी हूँ ग्रुप के ऊपर, बिकॉज वो फिर बाद में स्टेट्स ने उसको ऑन किया एंड ऑल दैट। थैंक यू इकरा फॉर शेयरिंग। कंक्लूड मैं रिपीट करूँ जी, इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, ओल्डर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, पुराने कॉन्फ्लिक्ट हैं, क्रॉनिक इश्यूज हैं, फिर नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स आर टू मच, सो ऑल दीज फैक्टर्स मेक इट अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. And the best that India Pakistan can do is the de-escalation on these conflicts. The best that they can do is the de-escalation or conflict management instead of resolution in the short term. However, considering the geostrategic environment, considering the dynamics of Indian and Pakistani politics, and considering the Narendra Modi's fascist government, it is less likely that India Pakistan are going to resolve their conflicts or manage their conflicts anytime soon. कायनात हम इस पे बहस कर सकते हैं, बट जब आईआर पढ़ेंगे फिर करेंगे, और आईआर मैंने पढ़ानी नहीं है, इसका मतलब हम बात करेंगे नहीं. जुल्फकार जनम मीर साहब कुछ भी कह सकते हैं, डोंट कोट हिम इन योर पेपर्स, डोंट कोट हिम इन द पेपर्स. असल में कायनात और इकरा एक बात याद रखिएगा, एक जुमला हम आईआर में बोलते हैं, हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स, हिस्ट्री इज रिटन बाय द विक्टर्स. जो जंग जीतता है स्टोरी वही बताता है, दैट्स अ सिंपल आइडिया. एंड दिस जर्मनी इज टू बी ब्लेम्ड फॉर हैज बीन टोल्ड टू अस बाय द वेस्टर्न वर्ल्ड. और बाय द वे, क्या अपीजमेंट पॉलिसी में क्या ब्रिटेन ने एग्री नहीं किया था दैट जर्मनी वाज हार्शली ट्रीटेड? ये ब्रिटेन ने माना था दैट दे वर हार्शली ट्रीटेड आफ्टर तो अगर वो मान रहे हैं तो हमें भी मान लेना चाहिए कि सारा कुछ जर्मनी वाज टू बी ब्लेम्ड फॉर, बट वी कांट सोली ब्लेम जर्मनी ऑन दैट. चले आगे चलते हैं जी अपने टॉपिक में. इसको मिटा देते हैं, बोर्ड खराब हो जाएगा. वही मैंने यूरेशियन टाइम्स का नाम सुना है, मैंने शायद पढ़ा नहीं है उसको, मुझे देखना पड़ेगा यूरेशियन टाइम में पब्लिश कौन करता है. मीडिया को मैंने पहले कहा सिलेक्टेड फैक्ट्स करते हैं. इट मस्ट बी देखिए वही मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाह रहा हूं. हाँ वही ना, मुझे एक छोटा सा फैक्ट याद रखिएगा. क्या पाकिस्तान कश्मीर में करंटली डू वी नीड मिलिटेंसी इन कश्मीर? Obviously we don't. So अगर हम ऐसा कर रहे होंगे तो बेवकूफी कर रहे होंगे, and I don't think Pakistan has a fully foreign policy. वो असल में इसके ट्विन हैं, एक अफगानिस्तान में तालिबान मिलिटेंट्स की ट्रेनिंग का मतलब है अफगान पीस प्रोसेस को हर्ट करना, और दूसरा जो कश्मीर का फोकस है, करंट फोकस है, वो इंडिया की ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, और उस फोकस को शिफ्ट करना टुवर्ड्स दैट इट्स अ इशू ऑफ मिलिटेंसी एंड टेररिज्म. ये टेररिज्म का इशू बनाना, ये बेसिकली इस प्रोपेगेंडा का पर्पस होता है. ओके, Pakistan's relations with Iran and Saudi Arabia. अच्छा, बिकॉज हमारे पास कितना टाइम है, 45 मिनट्स हैं, सो आप टाइम कम होगा तो आई वुड ट्राई कि मैं क्वेश्चन बिल्कुल आखिर में ले लूँ. आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो पूछिएगा, और जो कोई जवाब देना चाहे तो जवाब दे दीजिएगा, बिकॉज टाइम शॉर्ट है तो मैंने इस टॉपिक को कवर करना. अच्छा, पाकिस्तान रिलेशन विद ईरान एंड सऊदी अरेबिया. अच्छा, हमारे रिलेशन तो ईरान के साथ भी हैं, सऊदी अरेबिया के साथ भी हैं, बट हमारा जो मोस्ट लाइकली एंगल है जिस पे सवाल आ सकता है वो है पाकिस्तान रोल इन मीडिएशन बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया. ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान में जो मीडिएशन का रोल है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. अच्छा, अब अगर आप इसको देखिएगा, ये जो ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान राइवलरी है और उसमें जो पाकिस्तान का मीडिएशन का रोल है, जिसका इमरान खान साहब ने जिक्र भी किया 2-4 दिन पहले, वो एक इम्पॉर्टेंट एंगल है. अच्छा, न्यू डायमेंशन जो ऐड हुई वो थी पाकिस्तान की सऊदी अरेबिया के साथ रिफ्ट. लेकिन कैन यू ऑफिशियली टेल मी कि अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है पाकिस्तान सऊदी अरेबिया की रिफ्ट का, तो
इज इट समथिंग जो कि पब्लिकली हो रहा है? इज इट समथिंग दैट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और इज इट समथिंग दैट द गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया हैज ऑफिशियली एक्नॉलेज्ड? सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में जो कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा सा किरण चल रहा है, मैंने कहा अक्सर लोग कहते हैं तो इस पे नॉट येट एंड इट वोंट हैपन। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में पहले भी जितने कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं वो कभी पब्लिक नहीं होते। तो जब पब्लिक नहीं होंगे, कैन यू राइट a 20 marks question on that, 20 marks answer on that? Yes, he is given a statement, but आपके पास हार्ड फैक्ट्स नहीं होंगे, एजम्पशन होगी सऊदी अरेबिया ने इस वजह से किया होगा, उस वजह से किया होगा, एजम्पशंस होंगी सारी। कोई सऊदी अरेबिया की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से मजीद स्टेटमेंट नहीं आएंगी। यस, मैं अभिशूद ने देख कल ही परसों मेरे ख्याल में मिले थे वो, दैट्स ट्रू। देखिए उज़ैफा, अगर तो ये सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में जो कॉन्फ्लिक्ट है ये पब्लिक हो जाता है, जो कि होना नहीं है। मैंने कहा सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में न कभी कोऑपरेशन पब्लिक हुआ है, न कभी कॉन्फ्लिक्ट पब्लिक होगा। इट विल नेवर बी पब्लिक दैट वे, इसलिए वो सारा हाइपोथेटिकल हो जाता है। सऊदी अरेबियंस पाकिस्तान को कहीं से भी आते हैं तो उस पर आपका सवाल पूरा बनता नहीं है 20 नंबर का, इसलिए मैं उस एंगल में बात नहीं करूंगा। मैं कर सकता हूं बट एजम्पशन होगी, मैं एज्यूम करूंगा कि जी सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, एक वजह इंडिया है, एक वजह ईरान है, मैं एज्यूम करूंगा एक वजह अमेरिका है, एक वजह सीपैक है, एक वजह अफगानिस्तान है, मैं एज्यूम करता जाऊंगा। वो एजम्पशन होगी सारी, उसके लिए मुझे एजम्पशन देने के लिए, उस एजम्पशन को प्रूव करने के लिए आई विल नॉट हैव द हार्ड फैक्ट्स टू प्रूव, इसलिए मेरा आंसर स्पेकुलेटिव हो जाएगा। और स्पेकुलेटिव आंसर जो होता है, अगर क्वेश्चन आ भी जाए जुल्फिकार आपके सवाल में, अगर आ भी जाए तो स्पेकुलेटिव आंसर को अवॉइड करें। ऐसा आंसर जिसमें आपके पास फैक्ट्स कोट करने के लिए ना हो, एविडेंसेस ना हो, तो लॉजिक ना हो, प्लाजिबल लॉजिक ना हो, तो आप उस क्वेश्चन को अवॉइड करें। मैं नहीं कह रहा नहीं आ सकता, कम चांसेस है, लेकिन अगर आ जाए तो अवॉइड करें। व्हाई अवॉइड? आपकी स्पेकुलेशन एग्जामिनर की स्पेकुलेशन से सेम होगी, इज इट नेसेसरी? वो ही माइट थिंक आपके पास एविडेंस होगा तो वो डिनाई नहीं कर पाएगा, अगर आपके पास एविडेंस नहीं होगा तो ही कैन चैलेंज यू। सो व्हाई टेक अ रिस्क ऑन दैट काइंड ऑफ थिंग? तो इसलिए मेरी जाती राय होती है स्पेकुलेटिव आंसर ना लिखें, वो आंसर लिखें जो कि फैक्ट्स की बुनियाद पे हो, जो कि हार्ड एविडेंस की बुनियाद पे आर्गुमेंट। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बट ऑब्वियसली यू कैन मेक योर ओन चॉइस ऑन दैट। सो पेपर में हमेशा नंबर ज्यादा आते हैं, सिर्फ इस वजह से नहीं है आपने ठीक अटेम्प्ट किया हो, आपने ठीक क्वेश्चन पिक किया हो, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब तो हमेशा वो क्वेश्चन पिक करें जिसके आंसर में आप अंदाजों के बजाय आप करेक्ट एनालिसिस कर सकें, एक फैक्ट्स की बुनियाद पे एनालिसिस कर सकें। ओके, सो लेट्स मूव जी, हम इस पे जाते हैं। पाकिस्तान का जो रोल है सऊदी अरेबिया ईरान कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, उस हवाले से हम बात करेंगे। अच्छा, यू विल स्टार्ट द आंसर टू दिस क्वेश्चन बाय एक्सप्लेनिंग द सऊदी अरेबिया ईरान राइवलरी। सऊदी अरेबिया ईरान राइवलरी क्या है, तो मुझे बताएंगे आप लोग, आपको क्या लगता है वैसे, व्हाट आर द बेसिस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया? सेक्टेरियन आ गया चले, और ऑयल, जजीना, इसी को मैं बढ़ ले रहा हूं, इकोनॉमिक राइवलरी, ट्रू, और हेजमनी इन मिडिल ईस्ट, गुड, रीजनल हेजमनी में कहता हूं, ट्रू, वही रीजनल सुपर पावर हो जाएगा, कंपटीशन रीजनल पावर, ठीक हो गया, न्यूक्लियर, ट्रू, न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ ईरान, ये कह दो, और फॉरेन में भी शाफी, इसको हम कहते हैं वी कैन यूज अ टर्म फॉर दैट, जो फॉरेन पॉलिसी का आप कहना चाह रहे हैं, द रोल ऑफ यूएस कह लें, इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, इजराइल की वजह से कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बदल चाइना, आमना ने चाइना कहा, हम ब्रॉडली कह सकते हैं जी। आप देखें चाइना के रोल पे मैं अभी बात नहीं करना चाह रहा, बट अगर लेट मी चाइना और यूएस को ब्रैकेट कर लेते हैं। लेट मी से रोल ऑफ ग्रेट पावर्स, उसमें चाइना यूएस दोनों की बात कर लेंगे, ऐसे कंबाइन कर लेते हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स, असद इज नॉट अ कॉज, इट इज द इंपैक्ट ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। इन वजहों से नॉन स्टेट एक्टर्स यूज किए जाते हैं,
नॉन स्टेट एक्टर्स की वजह से कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इनकी वजह से नॉन स्टेट एक्टर्स यूज होते हैं। तो आसान लफ्ज़ों में प्रॉक्सी वॉर इज क्रिएटेड बाय दीज रीजंस एंड प्रॉक्सी वॉर इज नॉट द रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। वाई चाइना, अभी एक्सप्लेन करूंगा सरकार, इसको एक्सप्लेन करूंगा, आई विल एक्सप्लेन दैट। प्रॉक्सी वॉर अगेन यमन वगैरह बच्चों ने कहा सारों ने, तो वो हम उसको एज अ काज नहीं देखेंगे, एज अ सिम्टम देखेंगे, एज अ इम्पैक्ट देखेंगे। मशहूद सेम आंसर, हम इन यमन के अंदर, इराक के अंदर का जो इंटरेस्ट है उस वजह से नहीं है, ये इम्पैक्ट्स हैं इन काजेस के। अच्छा, व्हाट अबाउट एक इंपॉर्टेंट है और वो है कल्चरल फैक्टर्स, सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। डू दे हैव सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट? आई विल एक्सप्लेन दैट। यस, ट्रू कायनात, दैट्स माय पॉइंट। उनका जो सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट है, और एक पॉइंट है हिस्टोरिकल टू, और एक और भी रीजन है, एंड दैट इज यस, हंटिंगटन वाला। मैं अभी आऊंगा उस पर, शाफी सी, नॉट एग्जैक्टली हंटिंगटन बट काइंड ऑफ, अभी आऊंगा उसके ऊपर। आखिरी पॉइंट जिसमें उठाना चाह रहा था दोनों के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट में, और वो है लीडरशिप ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। अच्छा, अब देखिए, कोर क्वेश्चन ये नहीं है, कोर क्वेश्चन ये है पाकिस्तान रोल एज अ मीडिएटर। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को आप बहुत शॉर्ट लिखेंगे, डीप नहीं जाएंगे, वेरी ब्रीफली, दो दो लाइनें, तीन तीन लाइनें हर एक इशू पे लिखेंगे। तो मैक्सिमम आप करेंगे इसके ऊपर तो 1 पेज से लेकर 1.5 पेज तक आप ये कॉन्फ्लिक्ट लिखेंगे, नॉट मोर देन दैट, 1 पेज और मैक्सिमम 1.5 पेज, बिकॉज कोर क्वेश्चन नहीं है ना। कोर क्वेश्चन तो है पाकिस्तान का रोल, पाकिस्तान में फोकस है, तो आप उसमें करेंगे, ये थोड़ा सा आइडिया देंगे इस कॉन्फ्लिक्ट को, और इसको रिलेट कैसे करेंगे ये मैं बाद में करूंगा। Briefly, sectarianism, obviously, Iran and Saudi Arabia represent the two broader Muslim sects. Iran is officially, constitutionally, a Shiite Islamic state, और Saudi Arabia represents the Sunni world, the Sunni Muslim world. So therefore, एक दोनों के दरमियान में sectarian conflict भी मौजूद है. That is part of their conflict. दूसरा है, और ये सेक्टेरियनिज्म कब से है, आप लिखेंगे ये सेंचुरीज ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट है, 79 से नहीं है, पुराना कॉन्फ्लिक्ट। इकोनॉमिक पे बात करेंगे तो ईरान इज अ मेजर सोर्स ऑफ ऑयल एंड गैस, इट हैज अ लॉट ऑफ रिजर्व्स इन ऑयल एंड गैस, इट्स रिच इन हाइड्रोकार्बन्स। Saudi Arabia and other Arab states are also rich in hydrocarbons. Saudi Arabia is currently world's largest oil producing country in the world. दुनिया में सबसे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री भी है, ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री भी है। लेकिन हाइड्रो नहीं, हाइड्रोकार्बन, आसमान, वो ऑयल एंड गैस को कहते हैं। अच्छा, ये जो इशू क्या है इसके ऊपर, इशू इज दैट सऊदी अरेबियंस एंड ईरानियंस consider each other as economic competitors. वो अपने आप को एक दूसरे का economic competitor कहते हैं, and by economic competitor they mean that if Iran start mass producing oil, that is likely to reduce the economic worth of Saudi oil. एक Saudi Arabians उसको अपना राइवल समझते हैं, that Saudi oil demand will be reduced if the Iranians start producing the oil. ये एक बेसिक वजह है उनके दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट की। फिर इकोनॉमिक में उनकी प्राइसिंग कहा जाता है। Saudi Arabia wanted a relatively middle level, a medium price tag with the oil. Iranians want high prices for oil. उसकी वजह यह है, Iran produces less and it is in economic obviously it's an economic problem, and it has been facing economic problems for long, and it wants the high prices that could sustain its economy. So Arabia wants, because it's world's largest producer, so it wants a stable prices, not too high, not too low, that could sustain its economy. तो प्राइसिंग का इशू भी दोनों के दरमियान में एक रिलेटिवली मौजूद था, अब नहीं है, बिकॉज अब तो ईरान एक्सपोर्ट ही नहीं करता। शॉर्टली रिपीट करूं जी, Iran's oil production is considered to be competitive to Saudi oil exports. देखिए ना, आसान सा एक क्वेश्चन है, आपने एक दुकान खोली, एक चीज बेच रहे हो, वही चीज बेचने वाला आपके साथ आ जाए, you will feel competition, you will feel that people will start buying from him and not from me.
and this is what we call the economic competitiveness, economic competition between the two. So ये एक economic factors भी वजह है दोनों के दरमियान में, and that's why Saudi Arabia likes to have sanctions on Iran. जब ईरान पे सैंक्शन लगती हैं, ईरानियन ऑयल मार्केट पे नहीं जाता, then everybody buys the Saudi oil. कायनात जब वो प्रोजेक्ट होगा फिर देखेंगे क्या होगा, फिलहाल कॉन्फ्लिक्ट क्या है इसके ऊपर है। वो प्रोजेक्ट अगले 50 साल का है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस ऑन दैट। रीजनल हेजमनी, जब रीजनल हेजमनी की बात करते हैं तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जस्ट किडिंग, बल्कि मैंने 25 इयर्स, आई नो 25 इयर्स है, बट जस्ट अगेन एक 32% का तो डिस्काउंट नहीं, मैंने तो 20% सुना था, बट एनीवे अगर 32% आपने पढ़ा है तो 32% डिस्काउंट वाली बात अगेन वो चाइना के लिए, हम तो ग्लोबल बात कर रहे हैं। डॉन में था, मैंने इसको 20% के करीब पढ़ा था, किसी और मैंने डांस ही नहीं पढ़ा था इस बारे में, एनीवे बट जो भी था, बट अगेन इट्स अ प्रपोज डील, अभी तक तो फाइनल एग्रीमेंट भी नहीं हुआ उसमें। और सेकेंडली हमें देखना पड़ेगा इसकी, ये जो डील है इसके बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, इसको आप बाद में जरा अगर आप पढ़ना चाहें तो आप देखिएगा। पहला सवाल तो ये पड़िएगा, इफ चाइना इज इन्वॉल्व इन दिस डील, जब वो इम्प्लीमेंटेशन शुरू करेंगे, हाउ कैन दे अवॉइड यूएस सैंक्शंस, डू दे वांट टू अवॉइड सैंक्शंस, क्या वो सैंक्शन अवॉइड कर पाएंगे या क्या वो करना चाह रहे हैं, ये सारी डिटेल भी हैं सारी जो आपको देखनी पड़ेंगे। मैंने भी मनीषा 20% नहीं पढ़ा था, बट एनीवे इसलिए मैं कमेंट नहीं कर रहा, मैंने डाउन से नहीं पढ़ा था इसलिए कर रहा, जो भी है। 18 पेजेस की डील है, बल्कि अगेन दिस इज 18 पेजेस आर प्रपोज डील, नॉट अ साइन डील। यस सारिफ, इसलिए इस डील के ऊपर एक आर्टिकल आया था रूपर्ट स्टोन का, आप में से किसी ने पढ़ा है रूपर्ट स्टोन का आर्टिकल? एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल था रूपर्ट स्टोन का, अब मुझे याद नहीं है, मैं शेयर करूंगा, मुझे अब याद नहीं है क्या न्यूयॉर्क टाइम में था या किसमें था, आप लोग मुझे इंसिस्ट करते हैं तो मुझे याद नहीं रहता। एक मिनट मैं देखता हूँ जी, मैं आपको अभी देखता हूँ, मुझे मिलता है तो आई कैन टेल यू द नेम। इफ यू अलाउ मी, जस्ट एक मिनट अलाउ कीजिएगा। अच्छा, रूपर्ट स्टोन का जो आर्टिकल था जी, नेशनल इंटरेस्ट में था, गेट रेडी फॉर, लिखे अपने पास आर्टिकल का टाइटल, नेशनल इंटरेस्ट में था, गेट रेडी फॉर द साइनो ईरानियन ग्रैंड अलायंस। I repeat this point, get ready for the Sino-Iranian Grand Alliance, ये आर्टिकल का टाइटल था, ये कोई 10 एक दिन पहले आया हुआ। यस शाफे, थैंक यू दिस वन, रूपर्ट स्टोन है मेरे ख्याल में इसके राइटर। हाँ, ही इज अ जर्नलिस्ट, वो जर्नलिस्ट है ऑब्वियसली, पाकिस्तान में आते रहते हैं हमारे पास यूनिवर्सिटी के अंदर भी, इज अ वेरी वेल नोन जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान में बड़े एक्सपर्ट हैं उसके ऊपर। खाजा सर, वो की पॉइंट बेसिकली इसी डिबेट के गिर्द घूमता है। मेरा जो आर्गुमेंट था कि ये जो $400 बिलियन की डील है, इट्स नॉट अ डन डील, इसके बारे में बहुत सारे डाउट्स हैं इसके ऊपर, तो इसको हम कैलकुलेशन में लाने से पहले वी रियली नीड टू थिंक ऑन दैट, ये बेसिकली इसका पॉइंट। थैंक यू शाफी फॉर शेयरिंग। ओके, सो कमिंग टू दिस रीजनल हेजमनी, रीजनल हेजमनी पे जब हम आते हैं तो इस के अंदर जो इशू है वो ये है दैट ईरान एंड सऊदी अरेबिया बोथ वांट टू हैव अ रीजनल इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट के अंदर, अरब वर्ल्ड के अंदर, दे बोथ वांट टू हैव देयर इन्फ्लुएंस, दे बोथ वांट टू मेक श्योर दैट दे रिप्रेजेंट द अरब्स इन द रीजनल एंड ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, इस मामले में एक पॉइंट और बड़ा इंपॉर्टेंट है इसी रीजनल हेजमनी में। 1979 में जब ईरान में रेवोल्यूशन आया था तो ईरान का एक कॉन्सेप्ट था, ईरान का एक स्लोगन था, एंड दे सेड वी वांट टू प्रोलिफरेट द इरानियन रेवोल्यूशन इन द मिडिल ईस्ट। आई रिपीट, उन्होंने कहा वी वांट टू प्रोलिफरेट द इस्लामिक रेवोल्यूशन, द इरानियन रेवोल्यूशन इन द मिडिल ईस्ट। अच्छा, अब आइडियोलॉजी ऑफ इरानियन रेवोल्यूशन एग्जैक्टली का, अच्छा वो क्या थी?
अब ईरानियन रेवोल्यूशन एक्सपोर्ट करने का दो मतलब है, देयर आर टू मीनिंग्स टू दिस थिंग। वन, जहां शिया मेजॉरिटी है वहां शियाइट स्टेट आएगी, इराक में, बहरेन में, लेबनान में, यमन में, इन तीन की तरफ इशारा था। यस, मिडिल ईस्ट के अंदर उन्होंने कहा था कि हम प्रोलिफरेट करेंगे, एक्सपेंड करेंगे अपना जो रेवोल्यूशन है मिडिल ईस्ट में। तो उसके दो मतलब, एक जहां शिया मेजॉरिटी है वहां स्टेट ऐसी आएगी, एक इराक, लेबनान, दूसरा ये बहरेन और यमन, ये चार मुल्क। साथ ही उन्होंने कहा, इसका दूसरी इंटरप्रिटेशन ये की जाती है जो अरब्स भी करते हैं, वो कहते हैं कि दिस आल्सो मींस दैट ईरान विल, जैसा ईरानियन रेवोल्यूशन आया था, अगर आप जानते हो, ईरान कह रहे हैं हसन, ईरानियंस ने जब रेवोल्यूशन आया था तो ईरान के अंदर रेवोल्यूशन के नतीजे में मोनार्की खत्म हुई थी, मोनार्की एंडेड एंड सम काइंड ऑफ डेमोक्रेसी स्टार्टेड डेवलपिंग। इलेक्शन होते हैं, आपको पता है, प्रेसिडेंट इलेक्शन से आता है, पार्लियामेंट इलेक्टेड होती है, सुप्रीम लीडर इलेक्टेड नहीं होता, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, बट स्टिल देयर इज सम काइंड ऑफ, आप एक क्लास में कहते हैं डेमोक्रेसी ना भी हो, बट एटलीस्ट इट इज द एंड ऑफ मोनार्की इन ईरान, इट्स द एंड ऑफ मोनार्की इन ईरान। तो जब ईरान में मोनार्की खत्म हुई तो ईरान ने कहा हम रेवोल्यूशन एक्सपोर्ट करेंगे, मींस दे वांट टू प्रमोट द एंड ऑफ मोनार्की इन द मिडिल ईस्ट। और ईरान के करीब करीब कहां कहां मोनार्की है? सऊदी अरेबिया में है, यमन, बहरेन में है, यूएई में है। इन सारी स्टेट्स को खतरा है दैट ईरान माइट प्रमोट द आइडिया ऑफ एंड ऑफ मोनार्की, एंड दे कंसिडर दिस स्लोगन, शियर स्लोगन होना भी उनको थ्रेट है, और जो मोनार्की का स्लोगन है दैट इज आल्सो अ थ्रेट। इसको हम कहते हैं रीजनल हेजेमनी। ईरान हैज अ रीजनल एम्बिशंस, promote its own ideology in the Middle East, end of monarchies and all that. That brings it into conflict with Saudi Arabia shortly. खालिद ने लिखा, खालिद, इराक में शिया मेजॉरिटी है, आप उसको डेमोग्राफी पढ़िएगा, शिया आर मेजॉरिटी इन इराक, दे वर अंडर द सद्दाम रूल बट नाउ दे आर इन मेजॉरिटी। शुरू में मेजॉरिटी में थे बट दे वर नॉट हैविंग अ गवर्नमेंट। ओके, सो लेट्स गो टू द थर्ड वन, न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ ईरान। न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ ईरान पे जाते हैं। खालिद, दे आर, मेरी रीडिंग है उसके बारे में, जो मैंने पढ़ा है, आप उसको एक दफा वेरीफाई भी कर लीजिएगा, रीड इट आउट, कि जो लार्जेस्ट सेक्टेरियन कम्युनिटी है वो शियाइट्स है, मेरा ख्याल है, लेकिन आप हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ ईरान, ओके, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ ईरान है, लेकिन इसको वेरीफाई कर लेंगे खालिद, ये आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा किसी जगह से, लेकिन ऑफिशियल सोर्स देखिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट, इराक की वेबसाइट पे या किसी वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पे या उस पर देखेंगे तो आपको ज्यादा फैक्ट्स मिल जाएंगे। न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ ईरान हम कर चुके हैं। ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, सऊदी अरेबियंस फियर दैट ईरान माइट हैव काइंड ऑफ ambitions for developing nuclear weapons. ईरान का जो ambition है to acquire nuclear weapons, that is there, and this Iranian ambition, they don't have nuclear weapons but they want to have nuclear weapons, and this Iranian nuclear program is a threat to Saudi Arabian security, and Saudi Arabia thinks that Iran's ambitions to have nuclear weapons might be a threat to the सऊदी अरेबियन सिक्योरिटी, वो सऊदी अरेबिया की जो सिक्योरिटी है उसके लिए एक खतरा है। ये एक न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ ईरान। और जब मैंने न्यूक्लियर इशू पढ़ाया था तो मैंने बताया होगा कि जो ट्रंप के इल्जामात थे, ट्रंप की रीजन ऑफ विड्रॉल थे, दे वर प्राइमरीली कमिंग फ्रॉम सऊदी अरेबिया एंड इजराइल। डिड आई टॉक ऑन दैट? हमने इस पे बात की थी। नहीं, हमने ट्रंप की मैंने रीजन बताई थी दो। एक मैंने कहा था कि मिसाइल प्रोग्राम है, ट्रंप विड्रॉल की बात की थी, मैंने कहा ट्रंप, मेरे सवाल का प्लीज जवाब दीजिएगा। क्या मैंने ये कहा था कि एक मिसाइल प्रोग्राम ईरान का इशू है, और दूसरा इशू ये था कि दे वांटेड दैट ईरान शुड एंड इट्स रोल प्रॉक्सी वॉर्स इन मिडिल ईस्ट? वी डिड जी, हमने ये बात की थी इसके ऊपर, एंड व्हेन वी डिड ऑब्वियसली वो दोनों ऑब्जेक्शन जो है वो उसके हैं, सऊदी अरेबिया के ऑब्जेक्शंस में से आते हैं। एनीवे, रोल ऑफ ग्रेट पावर्स रिपीट करता हूं शॉर्टली। ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जब उसकी डील हुई थी JCPOA
तो उस JCPOA के सबसे बड़े क्रिटिक जो थे दैट वाज सऊदी अरेबिया एंड इजराइल। पेपर में आप इजराइल नहीं लिखेंगे, सऊदी अरेबिया वाज वन ऑफ द मेजर क्रिटिक्स ऑफ दिस डील because Saudi Arabia feared that Iran might continue to develop civil nuclear program and ultimately it can develop nuclear weapons which will be a threat to Saudi Arabian security. ये मुनीसा ये बेसिकली पॉइंट है। और अपेरेंटली उन्होंने कहा था कि जो ये डील है दिस हैज गिवन ईरान टू मच बेनिफिट्स एंड इट हैज गेन्ड लिटिल फ्रॉम ईरान। ईरान ने बारगेन में कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसके ऊपर और उसको बेनिफिट ज्यादा दी गई डील में। सो सऊदी अरेबिया वाज द मेजर डिप्लोमेटिक पुश फॉर एंडिंग आवर यूएस विथड्रॉल फ्रॉम दिस डील। ये सिंपल वजह है। ओके, लेट्स गो टू सिविलाइजेशनल पॉइंट। अच्छा, रोल ऑफ ग्रेट पावर्स। रोल ऑफ ग्रेट पावर्स की बात करेंगे तो जो यूएस एंड सऊदी अरेबिया है, यूएस एंड चाइना है, देयर इंडो पैसिफिक कॉन्फ्लिक्ट is also dragging the extending the Iranian-Saudi Arabian divide. We know that Saudi Arabia is a major historical ally of the United States. So much so that US forces are present in Saudi Arabia. US की और सऊदी अरेबिया का पुराना अलायंस है और US की फोर्सेस मौजूद हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, उसकी साइड में मौजूद है। लेकिन साथ ही this is also important to know that recently Iran is making tilts towards the Chinese. ये जो सऊदी टिल्ट है, जो सऊदी ईरान की जो टिल्ट है टुवर्ड्स चाइना, और खासकर ये जो देयर इज अ टॉक ऑन $400 billion of the project. This project might be unreal, but the very idea that Iran and China are involved in strategic dialogue, that itself represents that the Indo-Pacific policy is not only dividing South Asia, it is also having now its impacts on the Middle East. पर्शियन गल्फ के अंदर भी उस इंडो पैसिफिक पॉलिसी की, उस पे जो ग्लोबल पावर्स की राइवलरी है उसकी डिवीजन हमें वहां भी नजर आ रही है। सऊदी अरेबिया ऑन द साइड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑब्वियसली, एंड ईरान ग्रेजुअली tilting towards the Chinese is one of the reasons why they are in conflict. जी, exactly, Asma. Iran has its own justifications for that too. No problem, Khalid. No problem. So yes, Asma, you are right. जो ईरान के पास ऑप्शन कोई नहीं है, Iran will be welcoming everything and all that. Faiza, very briefly, I said Indo-Pacific policy, which had been trying, through which the US and China, the Indo-Pacific policy through which US and China are trying to make alliances in this region. So US already had a historical close partnership with Saudi Arabia, and Iran is now gradually shifting and tilting its inclination or its tilt towards these Chinese, or which is evident from the talk of $400 billion of agreement. और सिर्फ $400 billion की बात नहीं है, असल बात ये है उसके अलावा भी इवन बियॉन्ड दैट, अगर आप ईरान का इशू देखें IAEA के फोरम पे, ईरान अक्सर चाइनीज जो है दे वोट इन फेवर ऑफ द ईरानियंस। एंड सिमिलरली जो चाबहार से जो रेलवे प्रोजेक्ट है दैट हैज बीन गिवन टू द चाइनीज कंपनीज, वो चाइनीज कंपनी को रेलवे प्रोजेक्ट भी दे दिया गया। सो दिस इज काइंड ऑफ शिफ्ट ओवर देयर। तो ग्रेट पावर्स जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर भी राइवलरीज क्रिएट कर रही है। वहीद श्योर, प्लीज अगर आप मुझे भी शेयर कर दीजिएगा, आई वुड लाइक टू रीड दैट आर्टिकल टू। Civilizational conflicts. Civilizational conflicts से मतलब ये है that Iran and Saudi Arabia both consider themselves to be superior civilizations. इसको आप history से भी link कर सकते हैं। They both claim that they are one of the oldest civilizations and they are the purer civilizations than each other. Persians consider themselves to be culturally superior to Arabs, and Arabs consider themselves culturally superior to Persians. और ये जो sense of superiority है, ये जो sense of civilizational conflict है, this existed even in the pre-Islamic era. इस्लाम से पहले का है, आज भी चल रहा है। किसी अरबी को किसी अजमी पर बर्तरी नहीं है। फायदा लिखेगा नहीं ये वाला, लेकिन पेपर में, लेकिन समझने के लिए बता रहा हूँ। किसी अरबी को किसी अजमी पर बर्तरी नहीं है, ये खुतबतुल विदा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था। When he stated it, तो obvious सी बात है, he had said it because at that time
the Arabs consider themselves superior to Ajam. समझते थे तो कहा ना, अगर ना समझ रहे होते तो Prophet won't have to give an example of that. So अजम किसे कहते हैं? अजम का लिटरली मतलब तो आपको पता है म्यूट होता है, गूंगा होता है, बट अरब्स नॉन अरब नहीं उसको, यस नॉन अरब, लेकिन ये तो जनरली कहते हैं, म्यूट गूंगे को कहते हैं, लेकिन ये लिटरली मतलब होता है गूंगा, ना जो ना बोल सकता हो। अरब्स ये गूंगे का लफ्ज पर्शियंस के लिए इस्तेमाल करते थे पर्टिकुलरली, कि ये गूंगे हैं, दे डू नॉट हैव अ लैंग्वेज एट ऑल, वो उनकी लैंग्वेज को लैंग्वेज नहीं कहते थे, सिंपली they used to call the Persians in derogatory sense the Ajam, mute, gunge. But obviously this was then taken in a larger context कि non-Arabs को, ये हमारी तर्जुमा है non-Arab का, असल तर्जुमा ये नहीं है, but mute कहते हैं उसको। तो उसका context जो था that was a kind of there. तो आप उस वक्त से हिस्ट्री से एग्जाम्पल ना दीजिएगा, yes obviously फायदा एग्जांपल तो ऐसा हम नहीं दे पाएंगे उसकी, सच एविडेंस दे पाएंगे, बट जस्ट ये कहेंगे क्योंकि करंट स्टेटमेंट जरूर आती हैं उनकी तरफ से, ईरानियंस की तरफ से आती हैं, सऊदी अरब की तरफ से स्टेटमेंट आती हैं। सऊदी अरबियंस ईरान को कहते हैं यू आर द वर्शिपर ऑफ द फायर एंड ऑल दैट, यू वर मेड सिविलाइज्ड बाय द प्रॉफिट हु केम फ्रॉम अरब वर्ल्ड। अरब से एक पैगंबर आए थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे और उन्होंने आपको सिविलाइज किया, आप तो आग को पूजने वाले थे, आप तो पारसी थे। और वो आगे से कहते हैं कि द प्रॉफिट केम फ्रॉम गॉड नॉट फ्रॉम अरब, वो अल्लाह ने भिजवाए थे प्रॉफिट, और उनको कहते हैं यू वर नोमैडिक पीपल, यू वर अनसिविलाइज्ड, यू वर मेड सिविलाइज्ड बाय द इस्लाम एंड ऑल दैट। तो ये काइंड ऑफ दोनों के दरमियान में ये रेफरेंस चलता है अक्सर, ये उनकी तरफ से, उधर से उनके उलमा कह रहे होते हैं, इधर से इनके उलमा कह रहे होते हैं, तो एक हिस्टोरिकल फैक्ट को जो है वो लेकर आते हैं इस राइवलरी के अंदर। जी जी खालिद, ये शिया सुन्नी का मसला तो बहुत बात का बना, ये तो इस्लाम से पहले के लड़ते रहे हैं, और उसकी वजह ट्रेड भी थी, बड़े कॉन्फ्लिक्ट थे। आप थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़िएगा खालिद, इसके अंदर बहुत पुराना कॉन्फ्लिक्ट है इनका आपस में। ट्रू ट्रू शाफे, तो ये बहुत पुरानी इनकी राइवलरी है इस्लाम से पहले की। लास्ट है मुस्लिम वर्ल्ड का, बोथ ईरान एंड सऊदी अरेबिया क्लेम टू रिप्रेजेंट द राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स। They both claim that they are the real champions and the guarantor of the rights of Muslims. Saudi Arabians कहते हैं कि जी हम मुस्लिम दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं, ईरानियंस कहते हैं हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कोर इश्यूज हैं, चाहे टेररिज्म हो तो ईरान टेररिज्म के बारे में अपना ओपिनियन रखता है, सऊदी अरेबिया ने अपना काउंटर टेररिज्म अलायंस बना दिया दैट वी रिप्रेजेंट एंड प्रोटेक्ट द मुस्लिम्स फ्रॉम टेररिज्म। इस्लामोफोबिया का मामला हो, ईरान भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे अपने आप को लीडरशिप के तौर पर लेता है, इस्लामोफोबिया का को काउंटर करने का चैंपियन लेता है। सऊदी अरेबिया आल्सो claims the same thing. Palestine का issue हो, all major issues that are faced by the Muslim world, both states claim to represent the Muslims at the, तो issue है कि both want to represent themselves as the leaders of the Muslim world. So ये सारे conflicts हैं between both of these states. टाइम ऊपर हो गया है, मैं अगला स्ट्रक्चर बता देता हूँ, एक्सप्लेन करूंगा बाद में जाके। कश्मीरी में भी बात कर सकते हैं, फायदा, यू कैन टॉक ऑन दैट टू, व्हाई नॉट, डेफिनेटली। ईरान कश्मीर पे बात करता है, आप उनके ईद पे खुतबे देखिएगा, देखें आप, तो दे विल पब्लिकली टॉक अबाउट द कश्मीरीज ऑन दैट, और जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती हैं। और अगर आप सऊदी अरेबिया को देखें तो नहीं, क्यों नहीं करता सऊदी अरेबिया? सऊदी अरेबिया आल्सो टॉक्स अबाउट 1045 तक है शरिया, पक्की बात है क्लास? ओके सॉरी मैं समझा था 1030 तक है, ठीक है। सऊदी अरेबिया जो ओआईसी के लेवल पे, माई अपोलॉजीज जी, मेरी मेमोरी थोड़ी खराब हो जाती है। सऊदी अरेबिया जो है वो ओआईसी के प्लेटफॉर्म पे, हाँ बायलैटरली नहीं करता, बट ओआईसी के प्लेटफॉर्म पे सऊदी अरेबिया इज द मेजर सपोर्टर टू द कश्मीरीज। ओआईसी पे पूरा एक कॉन्टेक्ट ग्रुप है ऑन कश्मीर, कश्मीर के ऊपर पूरा एक ग्रुप बनाया हुआ है दैट टॉक्स अबाउट द कश्मीर एंड ऑल इश्यूज। सो इसलिए लिमिटेड सपोर्ट है, ज्यादा नहीं, बट बोथ क्लेम टू रिप्रेजेंट द मुस्लिम वर्ल्ड। ये बेसिकली पॉइंट था। लेट अस नाउ लिंक इट विद द क्वेश्चन। ये तो उनका राइवलरी है। अब आते हैं पाकिस्तान के ऊपर। Why Saudi Arabia is not supporting Pakistan's stance in Kashmir in UN? They do provide the support on the OIC. They can't be proactive. India is one of the largest buyers of Saudi oil. Why would they do it? Wahid, why didn't we support them on Yemen? हमने यमन में अपनी फौजें क्यों नहीं भिजवाई थी?
when they needed us. हमारा इंटरेस्ट था ना, अब अगर उनका इंटरेस्ट इंडिया के साथ है तो व्हाई नॉट? तो इससे हर से अपने इंटरेस्ट होते हैं, हमें इसको माइंड नहीं करना चाहिए। अच्छा, कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन जी, फॉर द सेम रीजन, बिकॉज फॉरेन मिनिस्टर के लेवल की जो मीटिंग होगी दैट वुड एनाई इंडिया एंड सऊदी अरेबिया डज नॉट वांट टू एनाई इंडिया। जी वही एग्जैक्टली। अब यहां पे अफिनिटी वाली बात दोबारा आ जाएगी। लेट मी पुट हियर, इस टॉपिक पे वापस आते हैं। आफ्टर एलैबोरेटिंग द कॉन्फ्लिक्ट, व्हाट यू विल हैव टू राइट इज पाकिस्तान, अब आएंगे पाकिस्तान रोल इन मीडिएशन। अच्छा, अब जब मीडिएशन की बात करेंगे जरा गौर से सुनिएगा प्लीज, 10-12 मिनट है मेरे पास, काफी है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। इस पॉइंट को एक्सप्लेन आप खुद करेंगे, मैं आपको मेन आइडिया दे रहा हूं, एनालिटिकल आइडिया दे रहा हूं, आप प्लीज गौर से सुनिएगा। नाउ पाकिस्तान is making an attempt to play the role of a mediator between Iran and Saudi Arabia. अच्छा, मीडिएशन जब आप करना चाह रहे हैं तो मीडिएशन, पहला सवाल, वाई पाकिस्तान वांट्स टू मीडिएट, ये पहला फोकस है, हमारे इंटरेस्ट क्या है मीडिएशन के अंदर। अब इसको जरा डिटेल से, हाउ की बात बाद में आएगा, वाई का सवाल पहले आएगा। वाई वी वांट मीडिएशन, कैसे कर रहे हैं बात की बात आई, आप क्यों करना चाह रहे हैं? It is because Pakistan wants to mediate between Iran and Saudi Arabia because of two reasons. One, ideological. हम मुसलमान हैं और दो मुसलमान स्टेट्स में कॉन्फ्लिक्ट है, तो हम समझते हैं ये हमारी एक आइडियोलॉजिकल, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू ट्राई टू डिफ्यूज द टेंशन बिटवीन द टू स्टेट्स। दोनों मुसलमान स्टेट हैं, मॉरल बाउंड है, आइडियोलॉजी है, रिलीजन है, मिक्स कर दें इन सारी चीजों को, एंड दिस इज व्हाई वी वांट अमन। और ये बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है दैट पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम स्टेट के साथ फ्रेंडली हार्मोनियस रिलेशनशिप रखने की कोशिश करेगा। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल कौन सा होगा, आर्टिकल अर्ली 30s में आर्टिकल है जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। तो उसके तहत हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक रोल प्ले करें। पाकिस्तान बना भी इस्लाम के नाम पे था। दूसरी वजह, जियो स्ट्रेटेजिक प्लस इकोनॉमिक इंटरेस्ट, हमारे जियो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऐसे हैं दैट वी वांट टू प्ले द रोल ऑफ मीडिएटर। लेट मी नाउ एक्सप्लेन द स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। अब इसको एक्सप्लेन करूं, इस सेकंड पॉइंट को एक्सप्लेन करूं। व्हाट आर दोज इंटरेस्ट? वन, पाकिस्तान, तो ये पॉइंट गौर से सुनेंगे आपको समझ आ जाएगी। पाकिस्तान कोर फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव इज dehyphenation. Our core foreign policy objective is dehyphenation between Iran and Saudi Arabia. बताने की जरूरत नहीं है dehyphenation का। We want to have independent relations with Saudi Arabia. We want to have independent relations with Iran. सऊदी अरेबिया के साथ, ईरान के साथ, दोनों के साथ अच्छे रिलेशन जाते हैं, हमारे इंटरेस्ट है दोनों के साथ। सऊदी अरेबिया के साथ क्या इंटरेस्ट है? व्हाट आर इंटरेस्ट ऑन सऊदी अरेबिया? आर दे सिक्योरिटी और इकोनॉमिक? इकोनॉमिक है, सिर्फ ऑयल नहीं है, ब्रॉड इकोनॉमिक है कायनात। वो क्या इकोनॉमिक इंटरेस्ट है? ऑयल। वी गेट, सऊदी अरेबिया इज द सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ऑयल इंपोर्ट्स, दुनिया का दूसरा बड़ा सोर्स है पाकिस्तान के लिए ऑयल इंपोर्ट्स का। Secondly, it used to give us deferred payment oil, उधारा तेल देते रहे हमें, पहली दफा नहीं, तारीख में हमेशा देते हैं जब भी क्राइसिस आया, जब भी प्रॉब्लम होता है। So oil सेल भी और deferred payment oil भी। Then remittances की बात की, employment की बात की, जिनको हम कहते हैं expatriates की बात करते हैं। Pakistani workers work in Saudi Arabia, almost 2.7 million people
ऑफ पाकिस्तानीज वर्क इन सऊदी अरेबिया, 25 लाख से 27 लाख के दरमियान में पाकिस्तानी काम करते हैं वहां पे, तो एक सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। रेमिटेंसेज आते हैं उन्हीं एक्सपेट्रियाट्स से पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान को वो सेल आउट करते हैं। फिर पाकिस्तान के अंदर चैरिटीज, जिसको आप एड भी कह सकते हैं, अ लॉट ऑफ चैरिटी एड कम्स फ्रॉम सऊदी अरेबिया एज वेल। एफडीआई, सऊदी अरेबिया इज अ मेजर सोर्स ऑफ एफडीआई इन पाकिस्तान, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमारा उनसे इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है, वी हैव अ लॉट ऑफ डीप इकोनॉमिक रिलेशनशिप विद देम एज वेल। ये एक उनके साथ हमारा इंटरेस्ट है। ईरान के साथ क्या इंटरेस्ट है हमारे? ईरान के साथ क्या इंटरेस्ट है? सबसे बड़ा इंटरेस्ट है नेबर। ईरान इज अ टेरिटोरियल नेबर। नहीं, गैस नहीं लेते हम उससे, वही एग्जैक्टली मैं सिक्योरिटी के सेंस में बात करूंगा। गैस नहीं, हम गैस लेते नहीं है ईरान से। वो प्रोजेक्ट जो है ना वो हॉल्टेड है, अभी तक नहीं। हमारा नेबर है, सो ऑब्वियसली वो क्या कहते हैं, वाजपेयी साहब ने कहा था दैट यू कैन चेंज योर नेबर, यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स बट नॉट योर नेबर्स। So neighbor is a geostrategic compulsion on you. So as a neighbor, we want to have a good relation with them. And obviously, दूसरा इशू है काउंटरिंग टेररिज्म। आप ख्वाजा ईसा कह रहे हैं, मैं इसको टेररिज्म के बजाय अगर ये कह दूं इंसर्जेंसी लफ्ज यूज कर लूं, ज्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा। आप टेररिज्म भी कह सकते हैं, बट ज्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा अगर हम इंसर्जेंसी कहेंगे। काउंटरिंग इंसर्जेंसी, पाकिस्तान needs the Iranian support to counter Baloch insurgency. We depend on them. So much so that in 1970s, Iran sent 10,000 troops to support Pakistan's military operation against the insurgents. 1970s में, 1974 precisely, जब भुट्टो साहब ने बलोचों के खिलाफ ऑपरेशन किया था, मरी ट्राइब्स के खिलाफ, तो 10,000 Iranian soldiers आए थे पाकिस्तान to collaborate with Pakistan on that operation. So we want a strong, close collaboration with Iran to counter insurgency. We can't curb Baloch insurgency without the collaboration from Iran. तो हमारी उनके ऊपर एक है। फिर हमारा उनके बाद थोड़ा सा सेक्टेरियन रिलेशन भी है। Almost 20% of Pakistan's population is Shiite population, and if not all, most of them look up to Iran as a symbol of their religious guiding. Yes, pilgrims go to Iran as well. तो हमारा एक सेक्टेरियन लिंक है उनके साथ, हमारा एक 20% पाकिस्तान की पॉपुलेशन का लिंक है, एंड ऑब्वियसली दिस इज द कनेक्शन बिटवीन पाकिस्तान एंड ईरान, एक कल्चरल कनेक्शन है हमारा उनके साथ। सो ईरान के साथ हमारा जो इंटरेस्ट है अभी फिलहाल तो इकोनॉमिक नहीं है। 20% पॉपुलेशन है अभी जो शियाइट पॉपुलेशन कहलाती है, और सारे नहीं, बट वी ऑल नो दैट मोस्ट ऑफ देम दे लुक अप टू ईरान फॉर रिलीजियस एंड सेक्टेरियन गाइडलाइंस। तो ये पाकिस्तान का फिलहाल ट्रेड इतनी नहीं है कोमल, उसको में ज्यादा है, लिमिटेड ट्रेड है, उसका प्रॉस्पेक्ट बहुत ज्यादा है ट्रेड के, लेकिन है कम। वैसे बाय द वे ईरान पे सैंक्शन लगने से पहले हम उनके साथ फ्री ट्रेड नेगोशिएट कर रहे थे, वो हुई नहीं बिकॉज सैंक्शन लग गई, बट ईरान के साथ हमारी ट्रेड इंपॉर्टेंट है, आजकल नहीं है बिकॉज ऑफ द इशू। सो हमारा उनके साथ करंट देखा जाए, असद वो 1974 में ऑपरेशन किया था बलोच इंसर्जेंट्स के खिलाफ हमने, तो ईरान ने फौज भिजवाई थी हमारे साथ। रिलीजियस टूरिज्म है कायनात, वो पिलग्रिम्स का ऊपर जो जिक्र किया गया वही शियाइट पॉपुलेशन वाली बात आ जाएगी, सेक्टेरियन आ जाएगा। अच्छा, नाउ माय पॉइंट इज हमारी उनके साथ एज अ नेबर एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, प्राइमरली सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और कल्चरल सेंस में हमारी उनके ऊपर डिपेंडेंस है। यू कांट, CPEC कांट सक्सीड, Balochistan can't develop without controlling insurgency. We know that. This insurgency is key to the growth of CPEC, Gwadar, etc., etc. और बलूचिस्तान का जो सेपरेटिज्म है उसके हवाले से भी। तो पाकिस्तान की पीस इन बलूचिस्तान डिपेंड्स अपॉन ईरानियंस, एंड वी नो दैट। कुलभूषण ईरान से आए थे, वी ऑल नो दैट। सो इसलिए हमारा उनके साथ एक स्ट्रेटेजिक और दे गिफ्टेड अस कोरोना टू कोमल। कोरोना पे ईरान पे इल्जाम मैं लगाता हूँ, बट ज्यादा इसलिए नहीं लगाता बिकॉज इंडिया में तो कोरोना ईरान से नहीं आया था ना, यू अल्टीमेटली गेट इफेक्टेड बाय इट, वो आ ही जाता, बट एनीवे वो एक अलग डिबेट हो जाएगी। नाउ पॉइंट इज कि ईरान के साथ हमारी सिक्योरिटी डिपेंडेंसी है, सऊदी अरेबिया के साथ है इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, दोनों के साथ किसी हद तक डिपेंडेंसी हमारी है। अब हम डेफिनेशन इसलिए जाते हैं, हमारे ये इंटरेस्ट है, दोनों के साथ इंटरेस्ट है यहां पे, वी हैव इंटरेस्ट विद बोथ ऑफ देम। हैविंग सेड दिस थिंग,
अब पाकिस्तान डीहाइफिनेशन चाहता है, अलग अलग पार्टनरशिप चाहता है, बट रिमेंबर ऑलवेज प्लीज, द dehyphenation policy requires us to mediate, but this mediation and this dehyphenation can be successful only in two conditions. There are two conditions required for the success of dehyphenation and therefore mediation. One, आपकी मीडिएशन कहां चलती है, आपकी डीहाइफिनेशन कहां चलती है? वन, if you have leverage on both of them. अगर आपका लेवरेज हो दोनों के ऊपर तो आपकी मीडिएशन चल जाती है, आप डीहाइफिनेशन कर सकते हैं। लेकिन आप डीहाइफिनेशन चाहते हैं, मैं ईरान के साथ अलग रिलेशन रखना चाह रहा हूं, सऊदी अरब के साथ इंडिपेंडेंट रखना चाह रहा हूं, अगर वो आपको डिक्टेट करके नहीं किसी एक के साथ रखें तो आप कहें भाई आपको नुकसान होगा अगर आप हमें कहेंगे कि हम आपको चूज ना करें। इफ यू वांट टू नॉट हैव डीलिंग विद अस तो आपका नुकसान होगा। We have a leverage on you, so we ask you that we want mediation between both of you, we want dehyphenation between both of you. हम चाहते हैं हम आपसे अलग रिलेशन रखेंगे, उनके साथ अलग रखेंगे, और अलग रखने के लिए अगर आप राजी नहीं है तो हमारा आपके ऊपर लेवरेज है, यू विल गेट अफेक्टेड बाय इट। देखना पड़ेगा, डू पाकिस्तान हैव सिग्निफिकेंट लेवरेज ऑन ईरान एंड सऊदी अरेबिया? डू वी हैव? नो, एक लिमिटेड लेवरेज है। हमारी थोड़ी सी फौजें सऊदी अरब में बैठी हैं, हम थोड़ी सी उनको वेपन बेचते हैं, कोई 200-300 मिलियन डॉलर्स के वेपन बेचते हैं। ईरान के साथ एक ही है दैट ईरान के साथ हमारा लेवरेज ज्योग्राफी का है, वी कैन अलाउ आवर लैंड टू बी यूज्ड अगेंस्ट ईरान बाय यूएस और सऊदी अरेबिया। हम यूएस को, सऊदी अरेबिया को अपनी बेसिस दे दें तो ईरान की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो जाए। हमारा एक ज्योग्राफिक लेवरेज है ईरान के ऊपर, बट बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, बहुत सिग्निफिकेंट लेवरेज नहीं। एक लिमिटेड, if we have a limited leverage, it means we have a limited way of dehyphenation and a limited chance of the mediation. I'm not saying we can't mediate, I'm not saying we can't have dehyphenation, but that gets weakened when we have limited leverage on both states. ईरान के ऊपर ये हमारा ज्योग्राफिक लेवरेज है। B, this dehyphenation, सऊदी अरेबिया के ऊपर थोड़ा सिक्योरिटी है। We sell them around $300 million of weapons each year. We have placed some soldiers in Saudi Arabia, कोई 1200 के करीब सोल्जर्स हैं हमारे सऊदी अरेबिया में, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। अच्छा, अब इस पॉइंट पे आखिरी पॉइंट है, 1 मिनट और लगेगा, आपको समझ आ जाएगी सारी। लेवरेज लिमिटेड है हमारा, तो हमारी डीहाइफिनेशन परफेक्ट नहीं है। दूसरी कंडीशन एक डीहाइफिनेशन होने के लिए क्या चाहिए होती है? That is, if both states have manageable conflict. अगर ईरान में और सऊदी अरबिया में कॉन्फ्लिक्ट कम हो, कॉन्फ्लिक्ट की इंटेंसिटी कम हो, तो हमारे लिए डीहाइफिनेशन पॉसिबल। इंटेंसिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इंटेंसिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स जिनमें आप चाह रहे हैं मीडिएशन करना। ईरान और सऊदी अरबिया में अगर कॉन्फ्लिक्ट कम हो, इंटेंसिटी कम हो, तो आप ईरान के साथ अच्छे रिलेशन रखें, सऊदी अरबिया को एतराज नहीं होगा। सऊदी अरबिया के साथ अच्छे रिलेशन रखें, ईरान को एतराज नहीं होगा। ऐसा ही होता है। कॉन्फ्लिक्ट तो होगा, बट कॉन्फ्लिक्ट अगर कम होगा तो आप क्या कर सकते हैं? आप ईरान के साथ अलग रिलेशन रखें, सऊदी अरबिया के साथ अलग रिलेशन रखें। दैट कैन वर्क। This dehyphenation, this mediation can work if there is limited conflict between the two. अब मेरा सवाल आपसे ये है, now let's see why के आंसर पे दोबारा आते हैं। हमने कहा दो रीजन है, दो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे। एक आइडियोलॉजिकल रीजन है, हम मीडिएट करना चाह रहे हैं, दूसरा है जियोस्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट क्या है? डीहाइफिनेशन के इंटरेस्ट हैं ये वाले। अब अगला सवाल था कि क्या ये मीडिएशन, वाई वाले सवाल पे दोबारा आए। हमने कहा क्या मीडिएशन करना चाहें तो दो चीजों पे इफेक्ट करेगा। एक होगा कि लेवरेज हमारा है कि नहीं है, वो एक लिमिटेड है, और दूसरा क्या है कि उनकी इंटेंसिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अगर कम हो तो हम मीडिएशन कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट,
इस सारे को ध्यान में रखें और अब एक पॉइंट बताइएगा। अब पाकिस्तान मीडिएशन करने जा रहा है। दुनिया में मीडिएशन क्यों की जाती है? मीडिएशन इज डन फॉर टू पर्पसेस। वन, ईदर टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट और सेकंड टू मैनेज द कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या होता है? आप मीडिएट कर रहे हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं और दोनों को बिठा रहे हैं कि आप इश्यू को रिजॉल्व कर लें, खत्म कर दें, सॉल्व द प्रॉब्लम। मेरा आपसे सवाल है, पाकिस्तान की मीडिएशन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए नहीं है, क्यों नहीं है? व्हाई कांट वी प्ले द रोल ऑफ मीडिएटर फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन? ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ईरान सऊदी अरबिया में, कैन वी रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम? They are too historical, too big, too much to get resolved. अब हिस्ट्री को कैसे चेंज करेंगे? सिविलाइजेशन को कैसे चेंज करेंगे? आप कैसे कन्विंस करेंगे कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ दे? क्या अमेरिका की सैंक्शन नहीं कह पाई, हम कैसे कह पाएंगे? They are too complex to get resolved. No one can. They can, but we can't help them out. Conflict resolution is something for which we can't mediate. So why we mediate then? Why Pakistan mediates? The purpose of Pakistan's mediation is conflict. मैंने एक मिनट ना अभी करना है, क्योंकि वो तो सीधा पॉइंट आ जाएगा उसमें। अच्छा, purpose of Pakistan is, जो वहां पे why Pakistan does is for conflict management. We do not want to resolve their problems. We want them not to escalate their problems. We want them not to escalate their conflict. So the real aim of Pakistan's role of mediation is conflict management. Conflict management का फायदा क्या होगा? What will be the advantage to? The best advantage of conflict management is that will facilitate Pakistan's de-hyphenation policy. If there is no increased intensity between Iran and Saudi Arabia, we will continue to buy gas from Iran. We will continue to have good relations with Saudi Arabia. So the Pakistan's interests are not in conflict resolution. That's an ideal scenario. The practical approach of Pakistan is conflict management. This is what Pakistan's role is, and this is what Pakistan's role should be. अब आखिरी पॉइंट, हाउ कर रहे हैं हम, कैसे कर रहे हैं रोल प्ले? तो मैं दो इंस्टेंसेस बता देता हूं, आप उसको गूगल से पढ़िएगा, अगर ना समझ आई तो मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर लूंगा। वन वाज इन 2016, ये सिर्फ लिखवा रहा हूं, आप उसको देख लीजिएगा। वन वाज इन 2016 आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ शियाइट क्लेरिक शेख निमर अल निमर। एक शिया क्लेरिक थे सऊदी अरेबिया में जिनको एग्जीक्यूट किया गया, शेख निमर अल निमर। उसके बाद ईरान और सऊदी अरेबिया में कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हुआ एंड पाकिस्तान अटेम्प्टेड टू प्ले द रोल ऑफ मीडिएटर। एक आपने ये वाकया देखना है और उस वाकये को देखिएगा, उसके बाद क्या हुआ था मैं डिटेल से नहीं बता रहा, आप उसको पढ़िएगा। एंड पाकिस्तान मीडिएटेड नॉट टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम बट टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट को डी एस्केलेट करने में वी मीडिएटेड एट दैट टाइम। राहील शरीफ साहब थे, नवाज शरीफ साहब थे, वी विजिटेड। ये वाकया पढ़िएगा, ये क्या था, नहीं समझ आया तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। सेकेंड इज 2019। In 2019, वाकया क्या हुआ था? That was particularly the attack on Saudi oil installations. सऊदी अरेबिया की जो ऑयल इंस्टॉलेशंस थी उन पे हमला हुआ सितंबर 2019 अरामको की। यस एग्जैक्टली, ये जब वो वाकया हुआ अरामको पे अटैक का, उसके बाद पाकिस्तान अटेम्प्टेड टू प्ले द रोल ऑफ मीडिएटर बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया इन ऑर्डर टू डी एस्केलेट। उस अरामको के बाद भी दो तीन वाकयात हुए, बट अरामको वाज द बिगिनिंग ऑफ ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट। सऊदी अरेबियन ऑयल शिप्स पे हमले हुए, इस तरह के वाकयात हुए, दो तीन चार वाकयात हुए। सो उसके बाद पाकिस्तान ट्राइड टू डी एस्केलेट बाय प्लेइंग द रोल ऑफ मीडिएटर। सो दीज आर द टू रिसेंट ओकेजन्स, पास की बात नहीं कर रहा, दीज आर टू रिसेंट ओकेजन्स व्हेन पाकिस्तान एक्टेड टू मीडिएट इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट। एंड व्हाई वी रिड्यूस, यू विल हैव टू राइट ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स।
शेख निमर निमर एक शियाइट क्लरिक थे, आलिम थे शिया, जिनको एग्जीक्यूट किया सऊदी अरेबिया ने। आपको एनालिटिकल आइडिया समझ आ रहा है? डिड यू गेट द एनालिटिकल आइडिया? दैट वाज द बेसिक पॉइंट जी। बाकी ये वाकयात हैं, इनको देख लीजिएगा। वी विल कंटिन्यू टॉक ऑन दिस वन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन ऑन दिस वन तो हम जरूर करेंगे। थैंक यू वहीद फॉर शेयरिंग दिस आर्टिकल अगेन। थैंक यू। न्यूयॉर्क टाइम्स का 5 अगस्त को। थैंक यू। Yes, Arif, we were successful on both occasions, and that's what we want. हम resolve नहीं करवाएंगे, manage करवाएंगे। Thank you so much. God bless you, and see you inshallah next.